this is going to be a bit of a best of one series because, again, there's a lot of teams who are interested to play, so we will have to give them chance as well. So, with that, I am joined by Asiya today. Hello, Asiya. How are you doing? Hello, Vijay. I'm doing great. I hope you're also doing great, and I hope everyone who is in the stream is also doing great. And this once again we are here. This time we have Team Zenith on the left side going up against Team Will of D. Like I've seen Will of D play before, but Team Zenith is new for me. So let's just see how they perform. But for now, the band feels already up, and I think the same old bands I would say Zushin, Paquito, Mobius, Now, kind of Akai staple enters the bands at scene. this point. Definitely, we have been seeing these kind of picks coming in for such a Different long time, and perspectives these are the expose the picks same who are truth. going to be here as well. Now, again, I would love to see a Butterfly is Paquito born getting, by thy wish, picked guided up, or by maybe, lantern's light. having the first pick, but at the same time, his Born with damage is talent. really low. But looking forward to a Fight bit for of the bans as ultimate of now. answer. Guinevere, I feel like this is one of the heroes that is just not much needed and could be Crowned easily by counted heaven's as well. But mandate, but my that might be a legacy respect shall. See as well. value So in me? there you go. Oh, the You picks are should. really coming in very fast. We got the Fredrin, we got the Fury of Phoenix girl as Rocks well. need Has no the first pick. That is protection from the crazy. rain. Really, Is the really weird proof that that I'm still. Paquito wasn't You picked up, were nor was first in your Phobius, because cluster. I think they are kind of staple picks into the Let EXP. them play the But okay, this hero. is a surprise I for will us. be the truth And for this now, of world course, Zetian, desperately pretty strong needs. pick, especially with the global ultimate. She can help to reveal the position, especially during crucial team fights or when you're taking those special crucial objectives like the Turtle or the Lord. A And punch for a Fredrin, punch. I think Fredrin isn't such a, This land is our priority homeland, pick, and it especially will considering soon be that our there's the burial Baksha, which ground. is a perfect counter for picks like Fred, even a Leomord. So I think he really needs to be. Plus, even the carry has been picked up, PG. He'll be getting shredded to pieces. And God is always a very good option. He can melt down the Baksha. And even carry needs to be really careful from the God because the range is insane. The stunts are way too constant. Definitely, we'll have to look forward to what the teams are really plotting, given the fact that it is really looking good. Back onto the banning as well. It's been a bit quick, but at the same time, these are the picks that the teams wanted to go with. Belleric, I feel like the Atlas getting banned, that is a good thing. That is kind of crazy to see a Belleric being a good Now you counter lead the for way the to the Atlas and next vice versa adventure. as well. Both of them sitting onto a Muscle of 50-50, iron and we bones of are steel. getting that pick as of now. But what about a EXP laner? It is kind of a little bit worrying for me that the side of Team Will of D did not go in for a EXP as their first pick. Maybe trying to get that in quickly, but hey, the teams are really comfortable with this pick. Sora as their EXP, and to counter that, I was expecting, yep, a Lapu Lapu or even an Alert works very well. I would say that the Fredrin as well as the Yarlot, they are kind of very dicey picks here. And like there is a Belric which has been picked up, yet you go and pick up the Sora. Because if Sora tries to go in with the crowd control ultimate, I think that one turn from Belric can completely decimate his setup. Especially that second skill. If he wants to pull back enemies or maybe just pull them in any direction he wants, the Belric will be an issue. Meanwhile, the Gado, as well as the Sora, can actually follow up because both of them can dive in together. So these two make sense. And clutched in by that Zetian. I think these three make a pretty perfect combo. But then um, Arlord though, I think Arlord might face some issues because there's a taunt coming in from the Gadokaja. Well then, let's Troops just see. Both deployed. the EXPs are dicey for me. The Fredrin will be also dicey for me, considering that there is a carry. But here we are into the land of none. Let's just see which team gets the victory. Let's go, let's go. This is going to be the first match of the day. The teams are already right here to give up a good match. With that, Asoya, I have a question for you. Who do you think will be having the first blood in their hands? Hmm. Really? I think
Team Zenith, or I think it might be Team Will of Day because they have a Beldrick who is really strong and followed up by the God. God is one of the very scary mates in current meta. The only issue is that there is no one who can actually, he does not have much escapes except that flicker. So if he has a tank like a Belleric, maybe even an Atlas or any setter tank who can be in front, he can utilize that really well because he can constantly throw those stuns and the second skill just dishes out so much damage. So I think if the Beldrick plays well, it might be Will of D. Rest, it can even be a Zetian because the damage is also pretty good when you mix up that second and first skill together. Definitely, really looking forward to what it pertains because there is quite a lot of pressure going around into the mid lane as of now. Look at that now. Zaytian with her poking abilities is really good. She's been having a bit of an easier time as well. But what about the rotation? Talking about the poking abilities, even God is no less, and I do feel like him being into the meta as of now is just really working out really well. Mingo Flamingo goes in for the cut. He knows that his team members are right around the corner trying to help him out, but at the same time the turtle is here. So Will of D, will they be missing out onto the turtle? Well, they do, but look at the four-man ultimate coming in from the ZTN. Fredrin already very low, has a dash, just moves away, the revitalize being used up. The pokes from the ZTN is really devastating at this point. I think Melrick really needs to make, the Athena or maybe any magic defense as soon as possible. But for now, I think pretty easy turtle for them. Definitely easy turtle that is coming in, but at the same time, carry a bit of a late game while this Brody can easily burst you down. That is kind of a concern for me for the carry, but we will have to look forward what they are plotting. Okay, Mr. Guy goes Oh, in and the revitalize helping him, but oh, King Crux. it's a Belric with the taunt and the AOG also falling not onto anyone particularly but Belric. Belric just gets shredded down this early into the game. One kill in the hands of the marksman. You really do not want that because it is a carry after all, right? The sooner she scales, the worse it is for you. Meanwhile, in the top lane, it is a Sora versus Arlord. I think Arlord, both of them are pretty equally matched. Depends on how the Sora is playing. If he wastes his ultimate, it's a confirmed death for him. Meanwhile, if it's the opposite, Arlord just dashing away blindly, it might be the opposite. I really like how Rentaro is just giving out the sets, but him being low into the team fight, he should have just backed off. But it's okay as of now. QE's in it. They are trying to get in into a formation, trying to counter out. Oh God, out of position. That was really sad. Baksha just climbs on. Even the marksman is gone, and that beautiful ult coming in from the Belric, the revitalize right there. But look at the carry. She's just shredding the Belric down. Another kill into her hands and goes in with the flicker. Another kill into her hand. And with this, the carry, Peachy, what I was saying, carry already with 4 kills? 2 kills, actually. That is true. Look at them. It kind of shifted already. Talking about the game, especially the early game. Now, again, the early game, yes, that is just really going good for the side of Team QE Zenith. But the late game, we still have the teams trying to figure it out what they kind of a gameplay that they want to give. But so far, it is the side of Team Willow D trying to take a kill. They are trying to find that window of opportunity for them, but in a manner they are not able to take it away. There's still time for them. Early game, I'm kind of following a pattern nowadays. Even though early game is not secure, it is okay from the mid to the late game if you are able to get it on. Oh, Mr. Gush and Filmy X Plus gets taunted on. AOJ catches two, but that's not enough. Freddy Phoenix taken down. Okay, the Fury of Phoenix really stops them, and that just kills the Bakshi at the jump into the back lanes. Take Mingo Flamingo. Next on the topping block is that Nicholas. My goodness, once again, QE Zenith proving that they are dominant enough for this. The Baksha is actually the one turning the tails for them. Because, like, if you do see, I think Team Will of D did have the early game because they have God as well as the Belric, but
the Belric somehow is just getting shredded down. And it's, the most surprising thing about it is like, okay, the Flicker with the Brody trying to take down the carry, he can burst it down pretty easily. The ultimate might come up really soon, but only a bit not enough. But then, of course, the God comes in, takes that, secures that final kill. And with that in the EXP, we do see Sora with another clutch moment. Herman really, really low with the final slash, trying to go away with the Baksha is there with the health dashes in once again, still surviving, and the clutch is there, manages to move away in between the two people. My goodness, what a clutch right there. But the bottom lane taken down. The farm as well taken down as well. A bit slow movement coming in, and that is what it takes for the team to take away that advantage as well. At the same time, the turtle is up, and you would be trying to witness how they want to make sure to get it onto their hands. As of now, look at that. Mid lane, I feel like it should be taken over anytime soon now, but at the same time, from the side of Team QE, Prajwal is trying to be a little bit active, and now it's the time because it's been almost 7 minutes there. Oh, Mr. Gash coming in for Hrithik. He will be taken down, and there you go, Asuya. Oh. Beautiful setup coming in from Sora once again. A lot of damage coming in, even with the Brody, but the AOG hits onto 3 people, and Nichols will not be able to dash away as Suguru just shreds 2 people down into ashes. And with this, the first team might be in some situation, but no, it is pretty safe for now. And with this, I think Team Zenith, especially the carry, she's shining, even though it's still the early game, Preeti. I agree right there, given the fact that she is actually able to farm up, even coming towards the mid lane as well. That is working out very well for them. They'll have to try to, make sure to not give out farm, because now is the time to actually capture the mid game for them, especially for Will of D. Look at them, unstoppable for King Krux. He is just not stopping. And on top of that, his ultimate is really helping him to slow them down and actually give that anti-heal, which is much needed. It doesn't matter if the Zushin, not the Zushin, but the wait, what? Zetian. Yeah, Zetian. She, for a moment, I forgot the name. I was like, oh my goodness. But wait a minute, Mr. Gash once in comes in for the Bakshia, who is also armed and only 50% of the HP taken down. But in turn, they take down the take. AOG jumps in, catches one. That's a lot of damage coming in, but him taking down the lot of turret damage. The cutout catcher falls down. That is 1 for 2, and the roamer falling down. Crazy. Doesn't matter. It definitely doesn't matter because Team Zenith, absolute domination. The map control into their hands, the goal lead into the hands, the kill lead into her hand. 14 for 4. And most of us, most of the crash moments coming in from the Baksha. And that's why, PG, this is exactly why I was saying why pick Fredrin so early, because Baksha is open. They could have gone in for the Pogus, they could have gone in for the Paquito, but maybe, I think the only issue was since if they go for Paquito, maybe the Pogus gets picked up. But then they haven't even banned away the carry and yet going for something like a Fredrin. And I think the one more thing which is the issue which is happening with the side of Team Will of T is like Gord. He's using his ultimate on tanks, on something like a Baksha or even on the Karotkata, but damage isn't enough, right? The gold isn't there. And instead of the tank initiating, it is more of God who is initiating, and then Belrek just follows up with the ult and the taunt so that the ult's damage is still there. But then it's still not enough for the initiation for melting anyone down. So maybe Arlot, they need to look for Arlot to give some good final slash so that the carry gets caught up or even the Zetian gets caught up, because I don't think so the Baksha or the Karutkacha is getting melted at this point. Definitely. And on top of that, now that the teams are trying to get a kill, especially for the side of Team Will of D, and they will have to make sure. Look at that! He's waiting for the carry to jump in. He's waiting for the carry to get those, farm as well. He's giving away the creeps as well. This is really a good, playermanship that I have not seen in such a while. But wait a minute, AOG doesn't misses out, but the Fury of Phoenix takes down one. There's the carry who's just melting down one by one. Rintaro, who's taking down too much turret damage. I mean, out of 3 kills right there, 2 were him just tanking it out. But Sora, look at his positioning. Look at him into that
taking down to the turret. Like, he is just so determined to take that victory into the hands. Well, at this point, the Brody isn't farmed up, the God isn't farmed up. I think Team Will of the they really need to sit back and defend, wait for the God to get something, maybe something slow, so that he can, at least contribute to some of the damage, or even the Brody. But then even the Lord is coming up, but instead they're taking a team fight, which will be not favorable for them because they do not have enough gold to compete. And especially the R Lord, the vision was good, but just like I said before, he's just not working out because the follow-ups when an R-Lord gives a setup, your team really needs to be on the upper hand because they need to be in a situation where they can dive in along with the R-Lord and give follow-ups, give some damage to burst someone down. But that is not really happening for them right now. So the only I think the only hope will be just farming up. But then again, a carry in front of a carry, I don't know how even waiting up would even sound like. The only hope would be God marks down carry, but even that is not even possible because as soon as God uses up his ultimate, there's the ZTN using up the Fury of the Phoenix, just canceling down that ultimate. I think pretty good synergy coming in from side of Team Zenith. 100%. I do believe they are one of the members of the org. I do believe they do have, uh, a lot of teams as well as a bit of a good support as well. So they are actually working out very well. And on top of that, I kind of noticed where the Katot Kacha is playing it out as the setup maker rather than being the one who's jumping in. Just because they have a Baksha right there, he is able to jump in as first, trying to tank it all out. And him being a tank, a jungler, it is like 10 on 10 pick right there. Look at that, Nicholas. He's not been able to jump in. He's not getting the chance to jump in as well. That is definitely crazy. Once again, you're talking about turrets falling down. I feel like, during the Lord, they should have kept a check onto the bottom lane, coming in from the side of Will of D, because now the bottom lane there's going to be a lot of pressure. Definitely, they should have gone in for a split push, but they just didn't. And just like you said, PT, it is such a blessing to have a good EXP for the roamer because when the EXP is the one who goes in first, set up roamers like the Kadotkacha or even the Carmela, they'll wait it out and then they'll wait till everyone groups up and then use their ultimate. And that's what the Kadotkacha is doing because Basha is the one who is in the front waiting. And the Sora, usually I see Prajwal giving really good setups, but even in this game, he's also waiting it out. He's not the initiator. He's waiting for Basha to initiate. So you have everything good going on for them for now. But the next Lord is coming up. Will they be able to defend? That's a question I would love to see because the chances of Will of D defending is really high because the front laners from them they can tank up damage, but at the same time they are falling down. That is definitely a problem. Nicholas taking on too much damage. Baksha looking for that window of opportunity along with Katotkacha, who is just around the corner as well. Oh my goodness, Suguru out of the way, Oh, but the Sora, what a setup coming in. 3-man knockup coming in from AOG and the monster get into the hands of Suguru. He tries to go in for more, but Prajwal will be taken down. Nicholas, they strike back. Will of D, look at them. They're pushing. Q is out of the way. Double kill finally into the hands of Filmy X. double kill, but at what cost? Two inhibitors gone away. And if they're not able to get the next Lord, I don't really think that they'll be able to clear it out. They do have the Brody, they do have the God, but then really dicey, right? A 50-50. And with that, I think that was a really good ultimate from the ZTN. It was a 5-man stun, a flawless control. And Fred was just, utilizing that beautiful ult, giving up a pretty good setup, but then again, this is what I was saying. The only issue for Sora is the Belric. Because if you want to dive out after the ultimate, after you gave the setup, you want to drag people away, there's the Belric with a lot of taunts. You will be just stuck inside, and that's what happened for him. Then again, it is what it is. They did manage to grab onto one inhibitor, so not much of an issue. But that just says that God, as well as the Brody, both of them, I think both of them have the Sky Piercer, and they managed to grab some stacks over there. Oh, definitely.
Let's see what the team is plotting as of now. Look at them. King Krug still around the corner, but they do realize the Lord is coming in, so they are just trying to scare them away so that they don't come in. As of now, team Will of D will have to go for an absolute defense. They will have to make sure that they don't lose any defenses right there, because once the front laners are gone down, especially Mango Flamingo and Filmy Eggs, who are the backbone, if they are down, it's gonna be a little bit of game over. But as of now, we'll have to check it out what the team is going to plot, because hey, the lot's gonna jump in. There's no inhibitors, and no inhibitors meaning the team will have immense pressure. That's going to be Team Will of T. As of now, QE Zenith still trying to look for someone for the pick off. And God, he should be really mindful of his positioning. Definitely, but the Lord is marching up along with the entire team. Someone really needs to bait away the ultimate from the Belric, but the taunt. Nicholas just trying to move away the Lord in the hope of just using this inhibitor to defend, but the AOG just lands onto one person. Once again, the Phoenix of the robe, and Nicholas will be getting taken down out there. But look at the damage coming in from the carry. She is a godlike as our Lord gets shredded down. Some exchange as Karukaja also falls, but look at the Sora goes in with the ultimate. A lot of stuns connecting, and Zetian grabs that kill onto the god. They're still trying to defend, but Lord just strikes down at the Nexus. QE Zenith, what a game coming in from this team. They really managed to capture every single aspect of it, and that too very, good, because look at that 6-0-11 at the hands of Bakshia. As a Bakshia, I feel like you are there deployed as a support, trying to take away those resources, those neutral objectives such as the Lord and the Turtle, but this was completely way around. Here, there was no chance for the members to actually have a good time. Definitely, a very dominating gameplay coming in from the side of Team Zenith. Especially, I really loved their synergy. I think it was the heroes they picked up, it was the draft, and just like they say, most of it is the draft. The rest of it is the execution. I think both of them was better on the hands of Team Zenith, and with that, I think very good gameplay coming from their side. But then, for now, we will be going in for a short break. Do stay tuned because we have a lot of more matches to come.
ladies and gentlemen. Welcome back to Algambo Esports MOBA Warmup Class Series. New week, not new week actually, the old week, but new uh, Scrim Clash. Right now, watching it out at Algambo Esports. The last game, I'll say, like there was a little bit of problem due to which we couldn't even have the game. But it's fine. We'll have more 5 games of the night to coming on. So you guys stay tuned with us. Don't go anywhere. Like, share, comment, and subscribe our channel. And do not forget to follow us in our Instagram and joining our Discord as well, because a lot of more events from Algambo Esports will get featured and will get, the info and everything you'll be getting on to our social media handles. And right now, Pitchy and me as TZ going to cast this game out. DRRS, let's say them Doctor as XMF, FMF. Okay, that's a very tricky name. So let's say them Doctor Ash. Oh wow, beautiful. Nice, Doctor Ash. Okay, you guys are Doctor Ash, and from this side, win by luck. Okay, thank you, man. I don't know. I have a team. Let's go. And with that, the draft is on. Looks like the tanky members are really targeted. Understandable, but at the same time, what are the options open for the jungle now that you know the Akai, the Fredrin is gone? What about next? Should be the Bakshia. Other than the Bakshia, the Phobius could be also another good pick. Other than the Bakshia, the Phobius is good pick. Even the Freya is good right now. So even I they can didn't cure also the opt the pain. Jushin into their I side. harness But it. it will be the Valentina getting banned here, though. So I mean, there is a chance. There is a high chance we might gonna see a God or maybe, you know, Zetian kind of picks here, or something like Sora also into the EXP lane. But from the side of team Doctor Ass, they're going for the last ban here. Butterflies It might be born had by it. thy wish, Let's see. No, it's a guided Jushin. by Gonna lantern's take out the light. Jushin. The Freya is open pitchy. Baksha is open as well. I'm glad that I'm going to see a Panda ban because the Panda is so much overpowered nowadays. If whoever team is getting that Panda into their lineup, they're kind of winning the game. So yep, it's getting one-sided every time I see a Panda around there. But first pick, Freya, Pitchy, Crowned what do by you think? heaven's mandate, my legacy Nope. It's shall none. endure. It's Zatian. That is crazy to see a Zatian. Even onto the first match, I was, lucky enough to see a Zatian as their first pick. And now that you know this is the pick, what are the teams plotting for? Let's see. Because a Zatian can be countered with a hero such as the God as well. Lane clearance is 10 on 10. So I'm kind of curious to see what the teams are interested to take. What are teams interested to take here? Well, the God. I told you, like the God and the Zetian, this might be the picks here, and the God will just get traded off into the side of Team Doctor Ash here, and they're gonna get the box share in the hand as well. But now the Claude. It It's might my be way get or the opted by win highway. by luck here. No, they're gonna go for the Ixia with the Martis off meta picks. They're gonna go for the comfort here. But now, as the Ixia is here, do you think like there is a chance of? I mean, is there a chance we're going to see a Hadith? Because Claude kind of not a good pick against the Ixia, I believe. But still, like when you are on the ultimate, the Claude will have more upper hand due to the blazing duet and the mobility. But let's see. Third pick about to come up. MM or EXP? What do you think? Freya is open now. Oh, Freya still open. Could be a good pick that too against an Ixia, but at the same time, there is tons of option quite open. So let's see if those kind of an options do pop up, such as a Bruno or a Beatrix as well. But other than that, the other side are opting in for a Kaja. And back to the banning phase. You know, the Valentina did get banned, so I was, kind of curious to see. Sora to jump in. Maybe Sora can be a good pick here, especially onto the red side, because they need a set maker. Since Kaja is a single set maker, he could just jump in, get his divine judgment on, and that's all. They can actually try to go for more, but let's see if that is the scenario or not. Get to catch out of the wave, and by luck, love that how they have so much damage. So much damage for sure. You know what, Pichi? Going for a pick off here is actually going to work better because look at it. Martyrs does have the mortal coil, but you're still going to catch it My up with that kiss grants suppression, you divine judgment. immortality So yeah, or I'm happy with the death. Skaja pick, and they're going to ban the Alice as well as Gatot Kaja. But I believe Team win by luck
might not gonna go for the I've been Alice waiting into the for too EXP. They might long. gonna try the Martis. It's a flex right now. It can go to the EXP. It can opt in into the jungle as well. And if it's going to the EXP, there is a huge chance because they banned the Alert. So I believe they might gonna use that Martis into the EXP. So jungle, okay, Xborg for the true damage because right now they don't have any true damage for this tanky Bakshia there. Okay, true damage. It's kind of crazy how they are kind of opting in for a hero that is really we have not seen in a long time. But at the same time, I do Now you believe his lead the way power to the spike next can be adventure. falling off if it's not kept in check. As of now, True Valentina love getting banned. This is is like what I Let was them worried play the about. And hero. when by luck, I I will be think the the truth this trap world that they have desperately laid of needs. banning out the Valentina did not work out very well. Yuzhong is there. That's also a very good pick. But at the same time, a Carmilla as their tank. Now, this is what Win by Luck are going in. Hey, these are comfort picks as of now, and I really love it given the fact that there are times I have seen that comfort picks works very well as well, but not a comfort pick coming in, but a meta or maybe a comfort if it's a main from this side. So let's see if that is going to be a MVP worthy hero or not. That's going to be a Moscow. Moscow, I have a feeling he will be ganked a lot because Martis, if he can take advantage of the new rotation, still goal lane gank is really optimal for him. Yep, Moscow. So I mean, told you like this is a good draft. I'll say from the side of team Dr. Ash here because they have suppression, they got crowd control, and they got finish as this Moscow being there. to So it's MOBA definitely a Legends. good job being cooked by them, and at the same time, win by luck. 5 seconds till the Really like enemy reaches the into the off meta, battlefield. but if they're Smash gonna them. work it better in a better All execution troops kind of part, deployed. they might gonna clinch the series as well. But let's see. It's all on to the Martis, like how the Martis is going to farm here. If the early game execution will be into the hand of team Win by Luck, there is a huge chance we're going to see the team, you know, Win by Luck gonna get the chance to win here. But side lane rotation started here. Started from the Lava Golem, take it out from the side of team Win by Luck, and now gonna go for the blue. Oh, The Martis are not aware about it. Prezzo. that is crazy though. Frazo is gonna lose out on a bit of an EXP while the Baksha will be one level ahead. And now that kind of an advantage. Team Aura is really trying to take it off, but at the same time, look at that Litho. Who is it going to be here? The Ixia, I'm not quite sure why the Ixia did jump in. If she would have been a bit behind as well, that would have been good. But at the same time, look at this. The first blood might be jumping in, but no, so far looking quite good. Hmm. And Win by Luck is actually, I'll say, like they started so well, even though they're having the off meta draft. Still, like even though they got invaded in the early game, that Lava Golem got in the side of team Dr. S. I believe like they still did not give any kind of trades to the side of Dr. S. So a very clean and precise game coming out from team Win by Luck here. But let's see how they going to, turn it out into the turtle fight. But before the turtle, we might gonna see Carmilla is getting a bonk there. Taunt from the god. Oh, he missed out. He missed it out. And now the first turtle. Oh, first circle's gonna come up. Akshay really capturing the river area to himself, but bot lane there is a quite a lot of pressure coming in for this Moscow. But at the same time, the team Win by Luck will have to go towards the turtle. First blood, that's gonna be the usual. No, he gets out of the way, completely unharmed by the black dragon form. But hey, top lane team Red are really hovering. Look at that. This is insane. Like starting Oh. the turtle there and about to get a kill onto that. Okay, what just happened? Off-cam kill just got captured there. Moskov got a kill onto the Ixia. Managed to take her down, even though he was badly beaten by the Ixia, but still surviving right now. Invasion is happening. Pichi
Oh, look at them! Rin taken down. That's the Martyrs you're talking about. Really having the power spike, really having the damage as well. You do not underestimate our level 4 Martyrs, though. Obviously, like this is the thing about the Mortis. Like you have the okay, another separation coming in here. ZT with the flicker backs out. That's a good one, I guess. Flip, but whoa, oh. Yuzong this time doesn't have the Black Dragon. It was onto the cooldown phase, so Sora managed to punish him down there into the top side. 2-1 the score is. Both the side laners of team Win by Luck has been taken down once, but now this winning lane effect onto the side lanes is really a pain into where Pichi. But let's see how they're going to, you know, concentrate the next phase of the game because it's somehow the second turtle about to burst into the Lanodon and it will be on the bot side. But this is the thing with the Martyrs, like you have the early game acceleration, Brocksha going in for the chase. Oh, look at that. Myron gets caught between that. Even though it is still, not even 5 minutes in, still they are in for a good amount of it. There you go. They're in feed kiss. That is just not the positioning. They should have gotten out as quickly as possible. He had the mobility as well, but no, that's going to be the Ixia jumping in as well. Ixia getting the assist is really good. So for both the sides, the winning condition has been just getting passed on left and right. Definitely. Let's see. The first turtle has been secured by the side of team Dr. As, but now it might be falling in the hand of Win by Luck. Look at it. Prezzo gonna get that turtle into his side there. It's a 1-4-1 into the macro, but now the team fight continues. Oh, look at that. Isel taken down. And with that, Prisoner trying to get away from the massacre was not able to do that. Win by Luck are really pushing out their luck as much as possible and actually getting a win in those ganks. They know that the game is totally early game concentrated, so now they are doing enough works with their smartest and getting as much as trade they can have it here. But on the top side, a structure is about to fall down there, and it might be the Thora taking it up. This is a little bit of lane expansion, and you can say trade-off has been happened from the South Team Dr. As here. But into the pit of the turtle, that's the main thing I'm going to talk about here, is the turtle accumulation. It's 1-for-1 now, and as per the team fights being taken out by a team Win by Luck, they're kind of succeeding with it. So there is a huge chance they're gonna go for it, but the Thora. Sora takes down one. Now Marin though really is getting caught off position in most of the scenarios, so that is definitely not looking good. But mid lane will be saved. A prisoner as well as Rin, not an optimal members to push it down because they definitely need a lot of help from their members such as the Izel. But hey, Rin, he's all alone, not liking that. He's getting out of the way. He knows he has to. But Prisoner, though, look at that. He's solely uninterested to take away the turtle. I mean, the turret. But oh, because of the connects onto two. And that's the goal. Take it off of position. This is why you don't trust a tank who is just going in for the turrets. With the flicker, the Kaza is safe. But what about the other members? Because Win by Luck knows that they just got an advantage. But oh, where is it? Oppenheimer takes away a kill right there. My goodness, so aggressive. And the area of Ixia is just working out very well in their favor. Definitely, and now it might be the Bakshia getting tormented here. He's getting chased down, but turtle secured, and the fight continues. Oh, into the mid lane, there you go. The Mystic Gush is right there along the flicker, trying to position himself away from the usual. Usual got caught onto the God stun as well, and another stun from the Spear of Misery, but now Akiza taken down. Now Frazo is really trying to find that window of opportunity. He was just taken out of that. Both the ways, the immaculation of the power shift we can see from Win by Luck as well as Dr. Ash. The start from the Dr. Ash was so good, but now Win by Luck is kind of having the spike into their hand. That's why they're taking up more and more fights, and they're getting good enough trades from the side of Dr. Ash as well. 2 turtles, and then you're gonna talk about have a count on the structures, that two on the bot and on the top. They have opened up the map there, but into the mid side, yet untouched. And so far, I'll say like it has been touched by Dr. S as well. So
Yep, like both the teams have been shared so many traits each other with each other, but the main thing is the gold. It's not having a big lead here. They are into the same phase, so definitely really going to see what will be happening if they will acquire a tier into the mid, because that will open up the map more for the Salop team win by luck, and then they will have a easy peasy lot still there. But now the fight concentration is getting lower here. They don't want to get more fights. They want to pace off the things. Dr. Ass know these things, like if they will move forward to more and more fights, they will be tormented. But there is a chance, Liquor. Wait a minute. Sora gets a very good setup right here. Out open armor gets shut down, and with that, Fraser is trying to look for more. Izel, the retribution is right there, slowing him down. No, Izel mixed with the petrify. That's gonna be the usual. Trying to go for the kill. Will he be able to take down? No, looks like Izel will be taken down. The Mystic Gush will be a little bit, a lot, but no. Stun onto the Carmilla. Is there another kill? Double kill for the god. They're trying to chase for more, but I feel like this is the time where they should just stop for the chase and take down the turrets and possibly the lot, because hey, Marin will be taken down. Oppenheimer jumps in there and that's the kill right there. Once again, Oppenheimer taken down. Trap. My goodness, what a kill, Fraser. He does have the retribution, but on to the same note, this is going to be the battle of retribution. Fraser still on the corner. They don't have a tank. They don't have the cards to suppress him, and still they're trying to do something. GV is trying to position himself. Look at that. The retribution is there into the hands of Team Aura. They take it away. They're trying to run away as well. But no, Yujong jumps in onto the Izel as well as GV. GV falls down, and there you go. Prisoner comes in, but he does get stunned up, and the stun is not working out because this time around the main damage dealer is not there. But Fraser, though, why did he make that play? Why did he go into the turret trap? Look at it. He's trying to go for the vulnerable members, and one by one win by luck of losing members as well. This is not looking good. Yep, this is the thing I was talking about, Pichi. Like, one by one they falls down. Lord goes into the hand of Team Dr. Ass, and now the Moscow is having a little bit of damage, you can say, because of the items getting completed. But before the Lord taking that fight and overextending it with the Black Dragon was really not the good choice or good decision being taken out by the Sada team win by luck here. And not only the kills, Pichi, but also the traits onto the structure has been secured here, as the mid tier 2 and the bot tier 2 has been fallen down. It's just the top, and it will get slammed by the Lord as well. So now you can say it's all over the outer turrets, which will be secured by the side of Team Dr. Ass, as well as they're gonna pop out that Holy Shield into the bot as well. So big trades into the macro scene, but into the micro as well, they have a lead too. On the scoreboard, and if you're gonna count the goal, they already imposed a 4k economical wise lead as well. So structure, economy, as well as you can say the kills, everything is into the hand of Team Dr. Asses right now. But how they will impose it into the late phase of the game, really going to watch it out here. But there is a little bit of skirmish going on here. Black Dragon formation. He's trying to go for GV once again. Look at that. He's scrambling for his life, but in the turret, oh my goodness, the suppression was really good with the flicker. But hey, they're still trying to get it on. Oppenheimer opens up his ultimate, trying to make sure to get a kill, and that's going to be the phrase of first to get a kill right there. A lot of flickers have been burned by by luck. They're trying to scramble himself with a triple kill. Goes in for more, and no way, Red, you steal up your teammate's maniac. But you know what? You have earned it. That is a maniac. That's a maniac. Definitely that's a maniac. And the way that suppressions came in there by okay, he goes in there. Look at it. Like, he is totally into it to take that Ixia down, but Ixia gonna resurrect back there. I mean, retaliate back there. But I believe that will be the difference, because the minion waves is barging in. But all those inhibitors will be taken out. So more +1s for the side of Team Dr. Az at this moment. They are having the late game spike into the hand, and you have seen the how to train your dragon, but right now it's Kaja who is showing us how to tame the dragon with that divine judgment. But now the Lord is here. The Black Dragon ultimate is on the cooldown. Martis, if he's going into that state of pit, then he might get taunted with the
Divine Judgment again. Look at the zone, proper zoning from both the sides. If they will continue these things, then really fear the Phoenix for the zone here. But still, nobody gonna go for the pit to contest out the Lord here. It will be the Antichirus opted by the Kaza for the Ixia. You know, the Ixia's damage will be, I mean, very much into a AoE kind of effect. So, yep, you're gonna take something to get defensive onto it. But right now, as the two inhibitors has been taken down, the Nexus is open for the side of Team Dr. S, and the minions is getting synced up as well. The Lord is marching from the mid. There is a huge chance we might gonna see the final push coming out from the Dr. S. Suddenly, the win got shifted. The lead, which was been shown by win by luck here, has been shifted into the hand of Team Dr. S. Just after the first Lord, then they managed to take out the inhibitor, and Easel has a big role into it. Lord coming in. Oh, the Lord's gonna come in. The inhibitor's not present. Sora goes in for a good setup. Catches to 3 right there onto the back lane. Sees Thunder will go in with the dark cloud form as well, but no, he will be taken down. Afiza trying to buy up some time, but he knows that he is quite low. He backs off as of now. The Lord is still alive. The minions are jumping in. Frazo is trying to find that energy as well, but no, 2 members getting stunned up. That is just right there. Izel tries to go. GV takes up a double kill, and that's going to be a triple kill. Oh, wait a minute, or maybe a maniac. No, that's going to be a kill for Izel. The team is really good at stealing each other's maniac, but hey, Aura is FMF. You guys won it all. Recall spam and the celebration was worth it because it will be Dr. AS who will be taking on this game number 3 at Algambo Esports MOBA Warmup Class Series against Team Win by Luck. The draft was a little bit hazy for Team Win by Luck. They went for something into the off meta, but then they worked it out in the early phase of the game. But once Easel got the spike into the damage, as well as I'll say Prisoner was really good with those Divine Judgment sets. Every time you see the dragon coming in, he is kind of teaming that dragon. Even Carmilla was doing so well here, but Ixia and Zaytian was not my favorites into this economy right now. So, yep, I believe Team Dr. AS will be learning much from this game. So do Team Win by Luck, and they will come back stronger. With this, we'll be coming back soon for the next game. Don't go anywhere. Stay tuned with us. This is your boy Asteezy with Pitchy with a short break.
Good evening, ladies and gentlemen, and welcome back to MOBA Warmup Clash sub series. We're going to be heading back to another beautiful match into the teams that are obviously contending just to practice, just to improve, and just to hone up their skills. And I love to cast in the scrims hosted by none other than, of course, Algambo Esports, powered by kridox, of course, supporting this endeavor for weeks after weeks after weeks. It's amazing that we are having this platform where not the big dogs, of course, big dogs, they're there at the MS3, right? But here we can see teams that are working in that. We've seen, of course, I mean, everybody knows teams like Godlike, SA2L, and everything, right? But they started somewhere. But sadly, not a lot of us got to see. But thankfully, we are here for the beginnings of these teams, and maybe one of the days these teams can rise up to that occasion, right? But until then, we'll be here cheering them on, and obviously being the voice of the game myself, Ray, along with none other than my brother from another mother. It's going to be Ash Deezy on the desk. Thank you so much for the introduction. I was waiting. I mean, today I've been hearing 3, 4 kind of different introduction because I'm throwing my intro to the different casters. But this was one of my favorite. Thank you so much, Ray, bro. But You're my right now we'll be favorite. going into the banning. We're going to the banning. Oh, is it QE Nebula? Yep. I mean, Yeah, the Quantum Eclipse Nebula. QE trio. Each today also every QE's team are playing or what? Yeah, they are very Okay. active into the scrims, man. Okay. Let's see. I mean, that will improve them into the game as well. So ARX, they're one of my favorite way. Their goal laner is kind of, you know, so mind blowing. Syndra and me, when we casted for Elite Esports versus ARX goal laner played so well in that game, but somehow Elite won that match. But right now, let's see how they're going to perform against QE Nebula. I casted for QE Zenith though last day on Wednesday, but now the ban's coming in here. 3 of the utility chunky tank junglers has been taken down. And from this side, we're going to see the Jushin, Sora with the glue. But now the Phobius got picked here. They got the insurance onto the Harith pick as well. But now do you feel like Paquito will get Crowned challenged? by Oh no, heaven's it's a mandate, Leo mode my with a legacy Satian. shall Okay. endure. Don't like the Leo mode after, of course, the nerfs into the jungle. But hey, it's the practice. Maybe they're trying something out to make the Leo mode work, right? Because sometimes we've seen non-meta heroes work. Leo mode right now, not exactly. To be fair, he's kind of non-meta right now. I mean, it makes sense, right? He had a whole season where he was one of the best fighters. Legit, I remember actually playing him after he got buffed, when he got the passive bar and the guaranteed crit rate was there. Not for low HP, but every time you get full passive, you can hit the crit, right? When this new passive came around, wow, he was strong, man. Like, I was dominating 1v5s, but sadly, his jungle speed is so low right now that before you can get that level, you're pretty much behind compared to all the tanky jungles right now into the meta. They farm so fast, and the only one that honestly catches up are the assassins. And even then, some of the assassins suffer against the likes of Akai, who thankfully has been banned out. Wait 1 second. Wait, oh, my bad. I did not notice. 3 utility bans. 3 utility bans here. I told you, like 3 utility bans. The 3 chunky tanks has been taken down. So now it's Marshall with the Valentina. Okay, if you're going for a Marshall, why you're going for a Valentina? Why not a God? Why not a Kimmy? Like this kind of things too works with the Marshall. There's Moscow coming in here from ARX. They're really going for the set off comp kind of thing, and you're really going to watch out. Maybe an Atlas or Ray, I'm telling you, maybe an Atlas or Gatot Kacha because CTN have a good combination with the Gatot. So we might gonna see that thing. Or if not the Gatot, then there might be a chance. There is a huge chance for Atlas to barge into the ARX side. But at the same time, they're going for those picks. It will be favoring the setup team QE Nebula because of that Valentina pick into their way. Now the last pan coming in from Team ARX. They already banned the Gwynny. Last pan might be falling into the goal lane side. It might be the Claude. Yep, it will. And this is QE Nebula. Let Ray thinks about My it. kiss grants you immortality or death. I do like the Valentina quite a bit, but yeah, you were talking about the Atlas, right? I think it will show up for sure. ARX can pick it up. They do have a really good combination, but Valentina can obviously steal it away. The Marcel was open, left out, and unsurprisingly, we're not going to be seeing the who got the skin today? Chow, Dairoth, Guinevere, and Paquito, right? Will anybody play the Dairoth or the Chow actually for this this flex? Unfortunately, no, I guess. But not the Dirat. I'm damn sure about it.
What was the last hero? Like Chao, Paquito, and Chao, Paquito, Dyrot, Guinevere. Guinevere, yeah, Guinevere. I haven't seen the Guinevere skin Chun-Li. yet. So, who's next? Yeah, whatever it is, son. Okay, that's cool, The man. immortal one chose me no. to vanquish the Thank you, shadows that thank you. plague this world. Too, thank you. But that was a real momentum. We saw the sun, and suddenly it's became Suyu there. Now the Paquito coming in here, and you're going to see the white guy, the white coat and everything. I mean, he's looking so handsome, man. He's looking really good with that skin. But with the carry coming in here from the QE Nebula, let's see how it performs for the setup team QE Nebula. Because so far, I'll say, like, even though there is not much tanky lineup from ARX, Team QE Nebula, they want to try this carry here. So do the Valentina, like the tech charge is on for her. Fear the Phoenix, and that's it. Yep. You're just gonna use that two ultimates, one for the info or for the initiation, and second one for the sets. Now Yep. all the sets has been complete from both these sides. Let's see who will be getting on to the mark for the win. This is the fourth game of Algambo Esports Weekly Scrim Clash, and you're right now watching it out at Algambo Esports YouTube channel. If you're new, then subscribe the channel. If you're already our subscriber, a member of our family, but do not forget to like the stream, share it to your friends, as well as comment down whom you're supporting, QE Nebula or ARX. And one day I'll ask Preetham Bhai to put QE Nebula versus QE Zenith. QE guys playing against each other. I mean, they must be playing, but still, I want to cast it out someday. But QE Nebula with a side Next week liberty. for sure. Anyways, we're in the game. Yep. Side lane rotation. Okay. This will be the, Throne Leaser as well as the Yep. Grammar. Both of Onto them the are going to top. be heading towards the right side of the map, then basically towards the bottom. And this is trying to not exactly mirror. This is like trying to go for their opposite sides, but since their top is their bottom, you end up in the same lane. So with this, I think we are going to be seeing the fight into the XP lane pretty soon. Then the Lord is 6-7 seconds away. Sorry, the turtle, and I believe this game will be a good visibility of how good the Paquito fares against the Povius. I still believe the amount of shield Paquito gets. Okay, it's insane. Like enhance S1 with another S1 is you basically become Esmeralda. S1 plus S1 Esmeralda. That's a beautiful innovation from Ray. But right now, Poke is coming in here. There might be a fight engaging, but it's just the zone out up from this Grok. Looking after the jungling efficiency, look at it. Like, I thought the Suyu is having more, faster jungle clearance. But what just happened onto the top side? Bot is totally getting attracted by each and every members of both these sides. But then onto the top, we saw off-cam kill. But now, Leo with the Phantom Seed. Okay. Is that a kill? Oh, Povius goes in. Red team hero has been slain. As today, are you the analyst? Yep, I told you. What the hell? My throaty not that good. I was like, I don't know why I just from the last game I was like, I want to do the analyst, but it's okay. Our throat is on, not the problem. Slain turtle now goes for it. What the heck? What the heck name of that duck? Okay, I saw something else. I was about to pronounce it. Duck. It's duck. Sorry. Okay, carry gonna get another kill on the Moscow. Bro, look at it. Like the carry is really having upper hand against that Moscow. Yep, absolutely. But I get it. It's a what the duck moment, right? It's a what the duck moment. It's duck. Remember, it's duck. It's not that. Yeah, what the duck. Yeah. Okay. But Ray, do you think like at this point of the game, I mean, the start is so well. I mean, Yeah. 4-0. They got the turtle, literally out meta picks, but Moscow, the spike, that's what they're gonna wait for. I think. Oh, top lane. That's a kill right there. To the Phoenix, Phantom Seed comes into the way, but the farm is too low on the Leo mode, and now he might escape it out. Before he escape out, he might gonna get the kill as well. Final blow on the Suyu by the Zatian. They're chasing down the Leo, who is right now at inch of health, and somehow the Leo gonna recall back. Nice follow-up, I'll say, from the sub team ARX. SOD?
Did not connect. Does not really connect, but it's gonna be okay. For now, though, match is still into the very early phase of the game. Oh, okay. Pagito has shield. It's not a worry, but he doesn't. He shouldn't stay in such a low HP unless he's trying to bait the Phobius to come inside the turret. I think that could be it, but he does have the flicker, so it's not going to be that easy to bait him inside the turret. Once the flicker is used, though, yeah, that's going to be valid strategy. But wait, was that the wall? Did the wall actually steal the orange? I think it is, yeah. I mean, definitely, you know, like, these players are, like, they're good. They're good with the macro sense, but losing out that fight there, chasing down the Leo mode. Phantom Steed comes into the way again. That is the Blade Surge being forced out by the Suyu. Fear the Phoenix comes into the way as well. You're gonna see the Infernal Pursuit. Golden Hour comes in. Take charge. Is it for defense, or he'll have a cooldown onto it? But Zayt, look at it. Got a kill there. It's totally connected. Engage happened from the Moscow onto the top. Not come in. Yep. Yeah, and right now it's gonna be okay for them. But the score of ARX right now, they're trying to respawn back. Oh, okay. It looks like ARX has a Kyle fan. He playing the Kyle with the Moscow. Oh, anyways, towards the top side. Oh, the movement speed is gonna be helping him to get out of there. Valentina, does she copy any ultimate? Sadly, she doesn't have it. Yasuo will go back. Right now, the turtle is up. Leo mode, he's been having a rough time lately. Not any kills, just dying. And this turtle is also going to be going away from his hand. He cannot respond to it. His team needs to give him the opening, but so far, the only one with kills is Krabby Patty, their captain. Krabby Patty, that guy is a good guy, man. He loves Syndra Bhai a lot. He's a Syndra Bhai fan. Yeah, Krabby Patty appreciates Hindi casters, by the way. Yeah, he loves to hear Hindi, but today you have to hear English. I'm really sorry you can for cast it. in Hindi. We can do mix. It's okay. We started it with English, so yep. But right now into the mid side, look at it. The invasion was about to happen, but it's just Joan coming out from the Grok here. But out of the top side, there might be a 2v1 situation out of the Moscow, and Moscow is aware of it. He's gonna play a little bit defensive out of the top. The means marching in is blocking out the lane there. It's more like a lane freezing kind of stuff coming out from the carry and the Marshal. But look at the Marshal. This time the Suyu gonna come in there. Blade Surge being used. Valentina for the follow-up. Retribution. Okay, that's the Infernal Pursuit coming out of the way. We might gonna see the Phantom Steed. Slither Rage feed this Leo mode. I don't know how much luck he's have today. He is going out in this kind of situation for like third time in this game so far. Yeah, impressive, honestly. To be fair, he has died twice, so I guess it's balancing it out. To be fair, right now he is having a little bit more defense. It's helping him out quite a bit. Low mid lane, they want to siege it. But yeah, that minion wave is just not going to be enough yet. They do have a lot of members in the mid lane clumped up together. Paquito trying to go for a slick push towards the bottom side. But right now he's getting zoned in by two. He does flicker away. Can he survive it? He does have a lot of dashes. But right now he's against a Phobius and a Suyu and a Valen. That's nasty, man. That's nasty. That was the trap down mechanism coming out from the side team. QE Nebula. But right now, another turtle about to burst into the land down, and let's see who will be having it. But Kyle, this guy playing that Beatrix last week, if I'm not wrong, when me and Shinra was casting, that game was so good. I don't know what is happening with the Moscow. He might be waiting for the proper damage kind of thing, and the SOD is not getting connected. That also might be the reason. But Turtle will be an easy excavation for this Suyu. I'm gonna get it there. QE Nebula is playing so well. Fear the Phoenix comes into the way there. That's a beautiful CC, I'll say, from the side of team. QE Nebula in full pursuit. We're gonna see the light will coming in. Slain happen onto Duck as well. 2v down. That will be the third one. Slain onto the Moscow. Kyle, he can't do anything at this moment. 9 for 2 Ray. The lead is so high. Evil Quilla. It's a Paquito, man. You can't trade him down there easily. Okay, it's not looking good for the side of ARX Esports, of course, because it is pretty much proven that QE Nebula, their macro in this game has been good. And Demon Kite, Domin Kite. Domin Kite here, damn. We got MPL names, right? But yeah, Domin Kite here. He is able to kite the Moscow pretty well. Pretty suited for his name. And look at that, the carry's bounty is massive right now. She will literally give you 1200 gold if you're able to take her out. Bro, is it the real Domin Kite from...
I'm not sure though. Importing Might real be- Dominkite for a scrim. Yeah, be for like- sure. Yeah, bro, be like, it's so much. I mean, I'm so much fed up with Aurora. Now it's time for playing for India. It's fine. It's fine. I mean, sometimes we mock these names, but these names have a clarity onto it. Like these guys idolize them, so that's why they go for this name. And if they can at least play 10% of what Dominkite is, I'll say India will have better position again and again. So yep, who knows? These teams are the future of MOBA 5 community scene. So they might gonna give some more and more energy into the game. 9-2. The score is again getting tormented. Flicker got baited from the top lane. Now that will be the clearance on the minions. Before that, I believe they're gonna play a little bit safer here. Okay, that's a knock on. Here the Phoenix ears. We're gonna see that Sodi connected this time. Kyle might gonna go for the engage, but the position is so good. I mean, so bad. Fan of Seed from the Valentina goes in there, tormenting down the Leo mode, but Leo mode is having the luck, but not for this game. For this moment, we're gonna see the Suyu taking down the Leo there. Goes back with the Soul Saver. Infernal Pursuit comes to the way. Kyle falls down. He does got the damage from the tier, but doesn't matter. But look at Dominkite is going for a split push backdoor, but the minions, they were not enough there. Obvious. I think that was an overextension. No need. I mean, you got the kill. You should goes back. What the need of going again and again? Like, it's okay. It's a scream, but if you play a real match, Ray, it's not a good thing. Like, you're giving out the bounties, and it might get, it might get backfire onto you. Yep. That's the thing about EXP is getting a lot of gold. You are the frontliners and you will be responsible to diving in deep. Sometimes that can cause you to die, and that's why as an EXP laner, it's better to not take many kills if you're not also one of the ADCs or the carries in the game. But yeah, getting back to the point is, of course, that Phoebus did make the mistake right there, diving into the turret head first. And I also want to give kudos to our streamer, man. He was showing death cam, death cam, basically. I love where he focuses on the dead bodies, but it's just kind of funny. It's like watching CSGO kind of a match. But anyways, 11-4 score is, and I also love the fact that Ash, I know it's a knockoff name in a way, it's copied, right? But I love the fact that we're getting to cast for Dominkite. Feels good, right? Yep, definitely. Like it feels like you're not Ray, you're Raymar. I'm not Ash. I'm who? Ashko? I don't know, bro. I'm just kidding right now. But the Lord Martin with Ash in his name, not starting, but okay. Here's the Phoenix ears, golden hour, and you're gonna see the turret falling down into the bot side as well. Now, look at the Phobius. He's kind of guarding that Lord here. This might be the final push. The way they're having the goal lead here, they might give the final push. So it's almost. Yeah, I think they can make it. Moskov is alone handling the Lord. And right now they're pressuring up the top as much as possible. There's going to be the Lord popping in, putting in the pressure right now. Okay, Leomord, he's looking for a flank, but I don't think it's going to be possible. He should have honestly contributed a little bit to taking down the Lord. The turret takes a few hits, which is not good. Look at that. It's already almost taken down. I don't know why Leomord was not helping out his team. The turret is going to take a lot of hits. Today, on the first minute, you said they might gonna go for the Lord, then on to the 12th minute, you're saying tough to... My brain is reversed today, mate. It's okay. It's totally fine, but look at it. I'm talking about it. ARX, they know how to, make that... Carry, holy hell. Light well, bro. It's light well's damage. I've seen Is much this the real more... Dominkite, really? Who knows? Who knows? It might be. It might be. He's must be playing from Philippines. Coconuthan, you got big player for you reaching in here. But look at the burst coming out from the Zetian. There might be a knock-on from this Grok. We're gonna see the Suyu starting to take out some damage. It's okay. It's a fluke. I'm sure. Like QE Nebula does have a discipline. Look at it, Ray. Like they are waiting for the Lord. They're not gonna take unnecessary fights. They will wait for the Lord to barge in, and they will take it, and then they might gonna go for the final push. Looking into itemization right now, Zetian with no cooldown except for Lightning Trencher. Oh, that's not good. That's not good. On the other hand, Moskov does have the Trinity build, so the damage is going to be there. Oh, Marcel with the Golden Hour connects with the Fury of the Phoenix. Fury of the Phoenix connected onto the 4 members, but right now the fight continues.
which you can see that they're chasing down the Leomore. Duck goes back, Marshall falls down, Slane happen onto the crow, and now they might gonna go for the duck. Oh, there is a crow, there is a duck, bro. I just figured it out. Anyways, Yep, there is a crow and there is a duck. Krabby Patty. Okay, yep. And now they're gonna go for the Lord here. 2 birds. Might not, you know, clock on one feeder. It's not. It's feeder, bro. Yep. Now it's the mid-lane time. Ash is very creative sometimes. Lord, marching on to the top. What do you think, Ray? ARX is known for their defensive strategies. That they somehow pulled out the game against Elite Esports towards 22 minutes mark. I remember that game. Me and Shinda were casting, and the game was so fascinating. But today, ARX is looking a little bit dull. They're not up to the mark because of the early game excitation from QE Nebula. So are we going to see an epic comeback? Lord, marching on to the top. Minions into the mid. Red team turret has been destroyed. Lord is going to be defended, no issues regarding that. Minions are rushing in, that's the issue for them. Leo mode right now, of course, he slowly is trying to build up, but what he can provide to the team is honestly very negligible, Ash. That's the thing about it. They even lose the bottom lane. Why are they not prioritizing their resources? They honestly could have defended that one. Look at Roman Kai. That damage! But now the Phantom Seed being used, and that's the forward Fury of the Phoenix from Valentina. We're gonna see that Golden Hour being forced out as well, but it's just the bot and the mid tier 2 bot inhibitor will be the, you know, the trades with this Lord. They will have to go for another Lord. Right now, it's more like even if you're defending up, the carry's damage is so high. Someone needs to go into the back line to crash out that carry, or else you kind of like if they're gonna go for an all-in-all fight, you might not gonna survive it. You might not gonna defend it properly. I agree with you on that, Ash. So far, the goal difference, right? The goal difference is massive with an 8,000 lead into the hands of Kiwi Nebula. Quantum Eclipse Nebula. Saying Kiwi sounds like I'm saying kiwi, the fruit. But anyways, Quantum Eclipse Nebula right now. About the bird, because there is Dark Crow and we have a Kiwi. Yeah. They should all. I mean, duck and a crow on a Krabby Patty. SpongeBob would be pleased. Definitely. And into the invade. This is the thing, right? The Leo mode is not getting enough farm here. Look at it. The Leo mode builds has not been completed yet. And if you're gonna check it out on QE Nebula, they are totally completed each and everything. There is a 9.7, no, it's 9k goal lead from QE Nebula, and they are maximizing it. They're not stopping it down there. Even though the game is going to the late phase, still, it's ARX were behind the turmoil. Right now, of course, what was it again? The Leo mode, of course, he has the Hunter Strike and the War Axe. It's good enough damage, but I think the thing is really lacking is the sustain. The Queen's Wings and the Breastplate are not exactly enough for him to sustain all of the damage that's already incoming from the rest of the members. And Domin Kite, he's true damage. No amount of defense is going to save him from him either. So he's right now caught in a pickle. On the other side, the carry's fully done with the Trinity build. Has a Malefic Gun and the Wind of Nature. No Rose Gold though. I think she can sell the boots and buy Rose Gold. The Mossbob is also in the kind of the same thing, but he doesn't have the Malefic Gun yet. On the other side, the Paquito with Anti-Cuirass. I don't think the Anti-Cuirass was honestly needed for him. He does have 2 burst items, the Hunter Strike and the Malefic Roar, but he's not able to shred or do anything. Like you mentioned, they have the items, they have the damage, but I guess the gold is still playing a favor because they aren't full item yet. They still need 2 more items on the EXP laner, as well as the mid laner needs 2 more items. EXP laner needs 1 more. Tells us upside right now, Lord is coming in full health. Look at Domin Kai. Domin Kai, this time gonna get the hand onto Duck, and that might be a double, but it will be Kaneki getting onto the mark. Domin Kai gonna lock down the base here, gonna take it down. And this will be the end, guys.
QE Nebula waiting for the perfect opportunity. Did not even barge in onto that mid lane. They tried it from the top and bot, where they opened it and finished it with a style, with a banger. Definitely one of the best game, I'll say. I mean, it's all too on the macro. You have seen QE Nebula with a proper discipline kind of game, other than that one moment in which Prince, he went in a little bit overboard and got punished. Other than that, I feel like each and every moves were calculated, and they were not barging in unnecessarily. They were waiting for the Lord. They're waiting for the perfect opportunities, perfect opening. Then only they are taking fights. Kyle this time will be on the 0 kill and 0 assist. He played well with that Beatrix last week, but tonight, it's not the night for ARX. It will be QE Nebula taking on the bottom forward. But with this, me, SCG, and alongside Ray will be coming back soon for the next game. Don't go anywhere. Stay tuned with us at Algambo Esports MOBA Warmup Class Series.
देवियों सज्जनों, आप सभी को स्वागत करता हूं। मैं एसटीजी, मेरे साथ रहेंगे शिनरा यहाँ पर इस अलगैम्बो ई स्पोर्ट्स के मोबा वार्म अप क्लास सीरीज के लिए। अभी आप देखने वाले हैं आज के रात का 5वां गेम, जो कि हो रहा है वेलोसिटी ई स्पोर्ट्स बनाम टीम मैवरिक के बीच। फिर से ये दोनों टीमें जो है भिड़ने आ चुकी है। देखते हैं कि आज टीम मैवरिक कौन सा कमाल दिखाती है या फिर टीम वेलोसिटी ई स्पोर्ट्स बाजी मार के लेती है। शिनरा भाई, स्वागत है आपका। क्या लग रहा है आपको, कौन सी टीम बाजी मारेगी और कौन से पिक्स आज आपको देखने को मिलेंगे? क्योंकि अकाई फर्स्ट पिक कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अभी ट्रेडमार्क बन गया है। आज मैं क्लैन पे कास्टिंग कर रहा था, फिर मैंने एक जगह कास्टिंग किया, फिर मैंने और एक जगह कास्टिंग किया। 3 जगह कास्टिंग करने के बाद ये मेरी चौथी जगह है और हर एक जगह पे मैं अकाई का वो फर्स्ट पिक प्रायोरिटी देख रहा हूँ। तो क्या लग रहा है आपको, यहाँ पे भी कुछ सेम ट्रेंड्स हमें देखने को मिलेंगे या फिर there's समथिंग डिफरेंट होने वाला है यहाँ पर? ये बिल्कुल। और अकाई की बात करें ना, वो भी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे मेटा पे भी चल रहे हैं। आई मीन एस रैंकिंग पे भी मान लीजिए उनको फर्स्ट नंबर पे रख दीजिए, सबसे आगे। उनका जो हैवी स्पिन अभी आ रहा है ना, वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है और इसीलिए यहाँ पे देखिए दूसरा बैन यहाँ पे टीम मैवरिक की तरफ से आता हुआ दिखेगा। बात करें टीम वेलोसिटी, वो वहाँ पे मौजूदा रहेंगी, लेकिन यहाँ पे बात करते हैं टीम मैवरिक की, तो जब से ये टीम आई है तब से एसटीजी बहुत बेहतरीन तरीके से इनके मेंबर्स के गेम प्ले वो बहुत बेहतरीन तरीके से आ रहा है। लाइक लास्ट टाइम आई थिंक आप और मैं ही थे जब कास्ट कर रहे थे इनका मैच, जी। और जब ये इनके बीच में चल रही थी फाइट्स, तो इनकी तरफ से गोल्ड लेन की तरफ से यानी मॉस्को का वो गेम प्ले आया था, जहाँ पे इन्होंने पूरा गेम जो है पलट के रख दिया था। तो वैसे ही गेम जो है यहाँ पे इनकी टीम की तरफ से आता हुआ दिख रहा था। उसके बाद जो दूसरा मैच गया था वो भी मैं कास्ट कर रहा था इस टीम का, वो भी काफी बेहतरीन तरीके से उन्होंने खेला, उस मैच को जीता। तो बात की जाए ना गेम के बीच में, तो अभी उभरती हुई टीम नजर आ रही है, अपना नाम जो है वो बनाती हुई दिख रही है। और लाइक ऐसा रहता है कि सामने ना थोड़ी सी लाइक नजरें इनके ऊपर जरूर रहेगी काफी सारी की। बात करें टीम वेलोसिटी, वो भी अभी नई टीम से थोड़ी थोड़ी उठने लगी है, अभी थोड़ा समझने लगी है मेटा को और आगे आगे खेल रही है। तो थोड़ा सा ये गेम जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। इसमें काफी सारी जो टीम्स है उनको आपस में पता लगेगा कि क्या वीकनेसेस यहाँ पे वो रहने वाली है उनकी आपस में, किस तरीके से ये दोनों जो है यहाँ पे चलते हुए दिखेंगे। अब बात करें पिक्स की, तो देखिए काफी इंटरेस्टिंग पिक्स जो हमें आते आते हुए दिखेंगे। रूबी यहाँ पे आ चुके हैं, उसके साथ साथ गॉड का आगमन होगा और वायसस यहाँ पे उठा लिया जाएगा। ओके, काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पे मेरे को पिक्स लग रहे हैं एसटीजी। वायसस की बात की जाए मेटा पे अभी इन ऑन एंड ऑफ बोल सकते हैं आपकी, थोड़ा सा है भी और नहीं भी है, कंडीशनल पिक रहते हैं काफी ज्यादा। और अभी जिस तरह ये जंगल की बात की जाए ना, यहाँ पे बात चलती है कि आपका हीरो कितनी जल्दी फार्म कर सकता है बेसिकली। और वाईएसएस वन ऑफ दी मैं कहूंगा कि फास्टेस्ट जंगलर्स में से है, जो जंगल जो है बहुत इजीली क्लियर आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फायदा थोड़ा सा जरूर रहेगा उनके पास, वो एडवांटेज क्रिएट करने का अपनी टीम के लिए। तो वहां पे बहुत अच्छा यहाँ पे जो है एडवांटेज रहेगा। रूबी की बात करें, अभी हालांकि इनके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्टमेंट किया गया था, जिसके कारण इनको ना थोड़ा सा बोल सकते हैं कि फाइटर टाइप लिया है, डैमेज इनका थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, जिसके कारण वो टीम फाइट पे ना बहुत अच्छी तरीके से स्किल जो स्पैम करती हुई दिखी है, रेदर देन कि वो ज्यादा डिफेंसिव खेले, वो थोड़ा अग्रेसिव खेलती हुई हमें दिखेगी। तो वो थोड़ा यहाँ पे जो अच्छा खासा रहेगा। लेकिन दूसरी साइड यहाँ पे देखिए टीम वेलोसिटी सीधा गुनिवर के ऊपर मार्क करेंगी, उनको जो है फटाफट से वो पिक चाहिए था। लापू लापू गुनिवर, ये अच्छा पिक यहाँ पे बन रहा है, लापू लापू इनिशिएट करते हुए दिख सकते हैं, स्पेशल माइग्रेशन के थ्रू गुनिवर भी आती हुई दिखेगी। तो बहुत अच्छा मैं कहूंगा कि तीनों ही जो पिक्स हुए ना वो काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन टीम मैवरिक की बात करूं तो वो आज थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल करती हुई दिख रही है, और ये मेरे को बहुत अच्छी बात लगी है यहाँ पे कि आप थोड़ा सा जो है नए फ्रेश पिक्स के साथ आ रहे हैं और आप कुछ जो है ट्राई आउट करना चाहते हैं। तो इसके लिए तो मैं सराहना करना जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हम देखते हैं ना कि सारे जितने भी अभी पिक्स चल रहे हैं, मेटा पिक्स जितने भी बात करें, वो 3 से 4 पिक्स हर बारी हमें आते हुए दिखते हैं और ऑलमोस्ट जो है वो सेम फाइट हमें आती हुई दिखती है। डेफिनेटली मिनोचॉर का यहाँ पर बैन, कलेया को भी बैन किया है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि ग्लू एंड कैरमिला को भी बैन करते हुए टीम वेलोसिटी अभी पिक करने वाले हैं। उनकी पहली पिक होने वाली है इस सेकंड पिकिंग फेज में। ग्विनी उनके जंगल पे जा रही है, लापू उनके ईएक्सपी में। तो अभी कहीं ना कहीं रोम पिक मुझे लग रहा है आएगा यहाँ पे, लास्ट पिक फोर्स आउट कर सकते हैं वो मिड के लिए। अगर मिड लेन जा रहे हैं तो फिर मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं यहाँ पर लीलिया के साथ यहाँ पर उतरना चाहिए आपको। लीलिया एक अच्छा पिक बन सकता है, बट नो। ये मेरा तीसरा गेम है और मैं तीसरी गेम में देख रहा हूँ जेटियन पिक हो रहा है। एंड डेफिनेटली एक बोलूंगा कि लाइक जिस भी गेम पे मैं जेटियन पिक देख रहा हूँ वो टीम हार रही है आज। तो वेलोसिटी अभी जेटियन पिक लिए, बट आई डोंट नो व्हाट विल बी द रिजल्ट। बट देखते हैं क्या होने वाला है। फिलहाल के लिए तो आखिरी 2 पिक यहाँ पर टीम मैवरिक्स की तरफ से आने वाली है। गॉड उनके मिड लेन पे है, तो देयर इज अ ह्यूज चांस वी माइट गोना सी अ यू नो
गटोत काचा और हाइलॉस जैसी कुछ पिक हम देख सकते हैं यहाँ पर, या फिर अटलास भी एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है, बट फिर अटलास को थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि जेटियन की जो पैसिव है वो अटलास को कहीं ना कहीं पुश करता है, तो या थोड़ा सा डिफिकल्टीज हो सकता है अटलास को शिन्ना भाई, बट लेट्स सी कौन से दो पिक्स यहाँ पर रहते हैं। और ईएक्सपी में अगर रूबी खेला जा रहा है तो फिर गोल्ड पे ईशनचिन है या फिर ये ईशनचिन एक फ्लेक्स है टू द जंगल, ये सारी कि चीजें अभी पता चल जाएगी। एस्मरेल्डा आगमन होते हुए यहाँ पर, तो रूबी रोम है, वाओ अच्छा नहीं रूबी उफ्रा रोम, गोल्ड जाएंगे आई थिंक। जी बिल्कुल, हाँ जहाँ तक रूबी गोल्ड जाएंगी, वायसस अपने जो है जंगल जाएंगे, एस्मराल्डा जो है अपनी एक्सपी की तरफ जाती हुई दिखेगी, या फिर उल्टा भी हो सकता है कि एस्मराल्डा को आप भेज दीजिए गोल्ड ताकि वो हैरिथ को काउंटर कर सके, उनकी जो शील्ड आएगी उनको काउंटर कर सके, और इसी के साथ जो है यहाँ पे रूबी वो दिखेंगी एक्सपी पे के, तो फ्लैक्स पिक्स यहाँ पे हो सकते हैं। कुफरा का आगमन यहाँ पे मैं कहूंगा कि लाइक पिछला एक गेम में यहाँ पे कास्ट करते हुए आ रहा हूँ, उस मैच में कुफरा ने जिस तरीके से खेला था भाई, काबिल तारीफ, वहां पे बहुत बेहतरीन तरीके से उनके जो इनिशिएट थे वो बहुत बेहतरीन तरीके से थे, उनकी जो अल्टीमेट वहां पे लग रही थी वो भी काबिल तारीफ। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उनको संभल के रहना पड़ेगा क्योंकि सामने भाष्य है, भाष्य के पास आपके पास एक स्ट्रॉन्ग फ्रंट लेन आ जाता है, उसके साथ साथ उनका जो पैसिव है वो काफी ज्यादा दिक्कत देगा यहाँ पे सस्टेन करने के लिए, क्योंकि एस्मराल्डा की शील्ड जो है वो भी थोड़ी सी घटती हुई दिखेगी। लेकिन ओवरऑल बात की जाए ना, यहाँ पे जो हीरोज है ना एक दूसरे को काउंटर करते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि आप बोल लीजिए यहाँ पे हैरिथ को काउंटर करेगी एस्मराल्डा, और उसके साथ साथ जो अपने लापू लापी उनको भी थोड़ा सा जो है काउंटर करने के लिए उठाया जाएगा, और उस उन दोनों को यहाँ पे जो है एस्मराल्डा को काउंटर करते हुए वो हमें दिखेंगे यहाँ पे बादशाह उनके रूप में, तो वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये मैच रहने वाला है। अब इसके ऊपर बात करते हैं यहाँ पे कि वायसस जो पिक हुआ है उसके ऊपर बात करते हैं एसटीजी। बात की जाए, देखिए बादशाह बादशाह का थोड़ा सा जंगलिंग स्पीड में मानूंगा थोड़ा सा स्लो रहने वाला है एज कम्पेयर टू वायसस। वायसस इजिली जाके ना वहाँ पे उनका जो क्रीप है ना वो इजिली यहाँ पे चुरा सकते हैं और उनको जो है वो लेवल गैप दे सकते हैं, और वो हमें देखने को भी मिलेगा। सीधा जाएंगे वो छोटे वाले जो क्रैब रहता है ना उसकी तरफ, और वहां से जो है वो एक बोल सकते हैं कि छोटा सा एक इनिशिएट है कि एक नया रोटेशन आप मान सकते हो। वायसस के साथ यही रोटेशन चलता हुआ दिखता है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत हो गई वहाँ पे, क्रीप थोड़ा आगे आ गए जिसके कारण उनको थोड़ा सा सफर करना पड़ेगा। छोटी छोटी गलतियां ही मतलब बहुत बड़ा चेंज लाती है गेम में, क्योंकि आपको पता है कि टाइम आपके पास उतना है नहीं, आपको फार्म जल्दी करना पड़ेगा, बट वो पेट दिक्कत दे रही है भाई, क्रिप दिक्कत दे रही है वहां पर, क्रिप के साथ वो अलग ही मौका। मैं तो भाई गुस्से में आके रिट्री यूज कर देता हूँ भाई, क्या यार कब से परेशान हो जाता हूँ मैं एकदम से कभी कभार। ये चीजें ना ये चीजें भी बहुत ज्यादा दिक्कत मतलब फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, मेरे को भी हो जाती है भाई। मैं इसलिए जंगल नहीं खेलता भाई, जंगल मेरे को लगता है कि पूरे मोबा में ना सबसे डिफिकल्ट रोल है और सबसे प्रेशर्ड वाला रोल। और देखिए यहाँ पे सीधा आए, मौके का फायदा उठाया, उनको पता था कि फार्म लेट हो चुका है और उसी के साथ रेड उठा के ले गए वायसस का। उनके पास जो एडवांटेज था जंगल क्लियर करने का फास्टेस्ट, वो अब लाइबिलिटी बन गया है मेरे दोस्त, क्योंकि उनको वो उन्होंने जो है बहुत सारा समय गवा दिया, जिसके कारण आपका जो अर्ली गेम है वो अच्छी तरीके से नहीं गया दोस्त। और अर्ली गेम वायसस पे ना जाना आपके लिए बहुत बुरी बात यहाँ पे बन सकती है। तो अपलेन की बात करें तो वहां पे प्रहार होता हुआ दिखेगा, एस्मराल्डा के ऊपर बहुत अच्छा खासा प्रहार होता हुआ कोशिश करना चाहते थोड़ा बेट आउट करने की प्रयास बिल्कुल, और उसी के साथ लापू गॉड वो लेके जाएंगे किल बढ़िया तरीके से। यहाँ पे टैंक वो इंगेज करने के लिए रेडी थे, वहां पे उनको भी पता था और बहुत अच्छी तरीके से वहां पे उनको लालच दिया कि आइए मेरा किल लीजिए, और जैसे ही वो आए वहां पे फंसा लिया उनको। डेफिनेटली एक मौका बना था, बट अभी टर्टल के पास उनके पास ज्यादा रिट्री लेवल है, पर उनको रोकने की पूरी कोशिश, पीछे से फिर द फीनिक्स का इस्तेमाल, आगे बढ़ते हुए बादशाह, और ये देखिए लापू लापू ब्रेविस फाइटर फ्लिकर के साथ अंदर आते हुए टॉर्मेंट करेंगे ईशनचिन को, डबल किल सिक्योर करेंगे, क्या ट्रिपल बन सकता है यहाँ पर, एक समय में सूत दिया है सभी को। ये टर्टल लेके यहाँ पर जेटियन पीछे हट रहे हैं, और नहीं बल्कि किल भी लेंगे यहाँ पर, रिवेंज ले लिया है भाई एकदम से। वो लापू की किल का रिवेंज इतना अच्छे से यहाँ पे लापू लापू ने लिया है कि मैं बता ही नहीं सकता। 3 किल, एक टर्टल, और अभी भी रुक नहीं रहा है। ये देखिए विनी ऑन द रोम फेस गोइंग इन देयर, थोड़ा सा कोशिश थी वहां पर कि एक सेट दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं निकल के वहां भी भाग आए। बहुत ही बढ़िया टीम वेलोसिटी आज बहुत ही अच्छा खेलती हुई टीम मैवरिक के अगेंस्ट। जी बिल्कुल, टीम मैवरिक की बात करें ना, थोड़ा सा वो आज थोड़ा सा ना स्टार्टिंग से ही वो थोड़ी सी गलतियां दिखी थी, और वो गलतियां दिखी थी जिसके कारण वो उनको थोड़ा सा वो प्रयास करना पड़ा। अब उनके पास जो ऑप्शन है ना वो थोड़ा सा कम रहेंगे, अब उनको थोड़ा सा अर्ली गेम थोड़ा सा स्लो खेलना पड़ेगा। और देखिए फिर दोबारा से यहाँ पे जो है फाइट होती हुई दिखी, जंगल एरिया में थोड़ा सा आएंगे, रोटेशन 3 बंदों का यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं।
और उसी के साथ मिड का जो लेन है वो क्लियर आउट करते हुए दिखेंगे। और देखिए ब्लू बफ यहाँ पे लेते हुए दिखे। दूसरी साइड की बात करें तो वहां पे भी अच्छा खासा भी फार्म गैप आपने ऑलरेडी दे दिया है। लेवल 6 हो चुके हैं। एक लेवल आपने साइड पे देखना पड़ेगा। 3 बंदों के बीच में रोटेशन निकलना चाहते हैं, वो शील्ड उनको जरूर मिलेगी थोड़ी सी। इस्तेमाल एक बढ़िया कॉम्बो और उसी के साथ डिलीट करेंगे। डबल किल वो फ्लाई की तरफ से आता हुआ और क्रश सोल, बहुत बेहतरीन कॉम्बो। एक के बदले 3 लेके गए और ये देखिए एक का डबल वो सुना था, यहाँ पे एक के ट्रिपल मिल रहे हैं। और ये बढ़िया मैं कहूंगा ट्रेड यहाँ पे लेते हुए गए हैं टीम मैवरिक। भाई वो सेट देखिए, वो जो गलाए हैं उनको मेल्ट किया है यहाँ पर फ्लाई ने। आई मीन लिटरली वो बहुत ही आक्रामक था। बट यहाँ पर रूबी जीरेजी बनाम हैरत यहाँ पर टॉर्मेंट करते हुए जीरेजी को शायद ओ बहुत ही बड़े एस्केप यहाँ पर जीरेजी की तरफ से। लेकिन हारिस के पास अभी थोड़ा सा मुश्किल वक्त कमांडो शक, लेकिन वो पीछे हट गए यहाँ पर। मुश्किल वक्त पे भी जो है बच के पीछे हटने के जो है सक्षम हुए। अच्छी बात है। अभी ये बोल सकती है टीम वेलोसिटी को पता है कि लाइक कहीं ना कहीं डैमेज के हिसाब से टीम मैवरिक्स यहाँ पर थोड़े से लो है। इट्स जस्ट द गॉड एंड ईशन शिन। तो देखते हैं लेट गेम पे हैरत के पास जब स्पाइक आएगा तब कैसा खेल दिखाते हैं। आप बोल सकते हैं दोनों जो है लापू गॉड एंड जी दोनों कैसा दिखाते हैं। बट यहाँ से पीछे आते हुए टर्टल सिक्योर करेंगे बादशाह। दो टर्टल यहाँ पर टीम वेलोसिटी लेती हुई और थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पर आता हुआ टीम मैवरिक के लिए। आज कुछ नई कोशिश चल रही है टीम मैवरिक के लिए। लाइक दे आर ट्राइंग समथिंग न्यू। मैं कभी देखता नहीं हूँ इन्हें डबल EXP जाते हुए, पहली बार है मुझे। ओह स्पेशल माइग्रेशन वाले गेम का कॉम्बो यहाँ पर लगता हुआ, लेकिन फिनिश नहीं कर पाएंगे। वो एस्मेराल्डा का जो शील्ड आता है, जो एब्जॉर्ब होता है, वो बहुत ज्यादा है यहाँ पर। उनको वहां पर एलिमिनेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल। ईशन शिन निचली भाग पे। अब बात करें यहाँ पे कि स्ट्रक्चर के ऊपर बढ़त अभी तक हासिल नहीं हुई दोनों टीमों से किसी के भी ऊपर, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप फटाफट से एक किल निकाल के उस स्ट्रक्चर के ऊपर बढ़त हासिल करें। यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, फिर दोबारा 3 बंदे आएंगे। दाराशाही इस बार नहीं बचते हुए निकलेंगे, सीधा दाराशाही किया जाएगा लापू गॉड को लापू के द्वारा। और इसी बात का फायदा उठाते हुए टीम वापसी आएंगी। लेकिन यहाँ पे देखेंगे ट्राई एंड रेंज मारने का प्रयास, बचते हुए निकल रहे, लेकिन डिनाई किया जाएगा उनको बाउंसिंग बॉल के द्वारा। कोशिश करना चाहते थे कि बच के निकल जाए स्पेशल माइग्रेशन, लेकिन वो डिनाई किया गया और बोला कि आपने ऊपर एस्मेराल्डा को मारा, उसके बाद आप कैसे बचेंगे, आपको तो हम यहाँ पे पकड़ लेंगे। और उसी के साथ बढ़िया कॉम्बो लगता हुआ। और यहाँ पे देखा जाए ना, मैं बोल ही रहा था कि पिछले गेम में भी यहाँ पे कूफरा जो है वो काफी अच्छी तरीके से खेलते हुए दिख रहे हैं। इस गेम में भी काफी अच्छे तरीके उनके तो एंगेज आती हुई दिख रही है। मिस्टिकस का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन समय बचते हुए निकलेंगे। लेकिन उसी समय यामाते पे वो मौजूदा रहने वाले हैं, डैमेज देते हुए गए। स्पेशल माइग्रेशन फ्लिकर का इस्तेमाल करेंगे, बीच में आए हैं और बढ़िया स्थिति। अब गए वापिस आए, वहां पे रोटेशन आएगा जरूर। मिड लेन क्लियर करते हुए एस्मेराल्डा फिर दोबारा टॉप की तरफ जाएंगी। यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, कोशिश करना चाहते हैं, फिर दोबारा से साइड स्टेप का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस बार माउंटेन शॉकर और उसी के साथ दारा चाहिए होंगे। 3 बंदे ऊपर की तरफ अब रोटेट करना चाहेंगे। टर्टल ऑलरेडी आ चुका है, तो टीम टर्टल के लिए जाती हुई और शायद टर्टल सिक्योर भी कर ले। इसके साथ तीसरी टर्टल सिक्योर कर सकते हैं वो, लेकिन रिट्रीब्यूशन स्पाइक अभी भी, ये देखिए मैं बोला था रिट्रीब्यूशन आ सकता है। चिमारू यहाँ पे, आई मीन ओरीमारू यहाँ पर लेते हुए इस टर्टल को 7-6 का ये स्कोर। धीरे धीरे आप देख सकते हैं टीम मैवरिक्स यहाँ पर कोशिश कर रही है कंटेस्ट करने की, और ये सब सफलता इसलिए हो रहा है क्योंकि फ्लाई यहाँ पर बहुत अच्छा खेल। समान फोर्स का इस्तेमाल, हैरत पीछे हटते हुए, लेकिन वहां पर पकड़ा है आई एम ऑफेंडेड से, और डबल किल सिक्योर होगा। अभी यहाँ पे लापू गॉड वो टॉर्मेंट कर दिए जाएंगे, लेकिन ट्रिपल आता हुआ काजिन फंसे हैं। जीरेजी गए हैं, लेकिन तुरंत उनका रिवेंज लेते हुए यहाँ पर ओनीमारू 4 के साथ खत्म किया ये ट्रेड विद जस्ट गिविंग 2। और ये देखिए वो रेड बफ जो छीना था उनसे, उसको वापसी ले लिया है यहाँ पर। पता है शिन्ना भाई, मैं जब जंगल करता हूँ ना, ऐसा कभी इन्वेड होता है, फिर जब बाद में स्पाइक आता है, मैं भाई मतलब जब जो मेरा बफ गया होता है, मैं इसको लेने के बाद मुझे लगता है यार ले लिया वापस। वो फीलिंग तो जरूर आती है, लेकिन यहाँ पे देखना पड़ेगा गॉड को यहाँ पे दाराशाही करेंगे इस बार। लापू ने बोला बच के नहीं निकल पाओगे मेरे दोस्त, और यदि जमान फोर्स लगेगा। कोरोना का इस्तेमाल लापू गॉड को यहाँ पे दाराशाही किया, कम बैक आता हुआ टीम का रिटेलिएशन, उसी के साथ वायलेटर क्रिम और एक और बंदे दाराशाही होंगे। पिछले बार जो 3 बंदे दाराशाही हुए थे, वापसी आते हुए ये बदला लेते हुए दिख रही है।
सामने काटेगी टक्कर भाई। टीम वेलोसिटी भी लाइक इतनी जल्दी ऐसे नहीं लाडले, वापिस तो हम भी आ चुके हैं। अब देखिए 11-11 का स्कोर है दोनों ही टीम का, लेकिन स्ट्रक्चर उसके ऊपर बात करें तो थोड़ी सी बढ़त यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि मिड का जो स्ट्रक्चर है ना वो यहाँ पे टीम एवरिक ने ऑलरेडी उड़ा दिया है। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर खेल आप देख सकते हैं, दोनों के स्कोर अभी सेम है, लेकिन बहुत ही बढ़िया सुंदर सा फ्लिकर उनकी तरफ से बच गए। डिफेंसिव फ्लिकर था ये, लेकिन जो डैमेज अभी आ रही है ना भारत की तरफ से, आप एक बोल सकते हैं कि यामित यहाँ पर बहुत ज्यादा डैमेज स्पाइक दिखा रहे हैं। अगर ऐसा ही मतलब हालचाल चलता रहा तो फिर वेलोसिटी स्पोर्ट्स दिक्कत दे सकती है लेट गेम पे। देखने लायक होगा किस तरीके से फ्लाई अपना पोजीशन यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि उनके ऊपर सीधा भाई टूट पड़ रहे हैं। होदिनी लुक भी नहीं रहे, टूट रहे। ओह दैट्स अ गुड पुश हियर फ्रॉम द ज़ीटियन। कोशिश थी वहां पर स्टारफल मून डालने की, लेकिन कहीं ना कहीं ब्यूटीफुल डिफेंस यहाँ पर आता हुआ टीम वेलोसिटी की तरफ से। लॉर्ड आ चुका है, देखते हैं हैरत क्लियर आउट कर रहे हैं लेन्स को। जीरेजी वहां पर मौजूद है। यही चीज दिक्कत हुआ है रूबी के साथ, जो नई रूबी है ना, मतलब अभी जो रूबी है उसके पास उतना ज्यादा लाइफ स्टील नहीं है। पहले जब रूबी एक स्वैप करती थी आपके आई एम ऑफेंडेड में, तो वो जितना रीजन होता था ना, वो वाला रीजन अभी आज आता नहीं आजकल। तो बिल्कुल उसको थोड़ा सा ना चेंज कर दिया, टैंक से थोड़ा उनको फाइटर की तरफ शिफ्ट कर दिया, वो डैमेज वहां पे ट्रेड ऑफ कर दिया है। और यहाँ पे थोड़ा सा वही देखना कि जो है आपको कोशिश करनी पड़ेगी यहाँ पे टीम मैवरिक को ना, कोशिश ये करनी चाहिए किसी भी तरीके से आप ये करें कि यानी कि जो हैरियत है ना उनको किसी तरीके से शट डाउन दे दीजिए। एक बार वो शट डाउन दे दिया आपने ना, तो फिर वो डैमेज जो आपको इतना ज्यादा चुभ रहा है, जो बर्स्ट डैमेज आ रहा है, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा टीम वेलोसिटी का। और उसके कारण ना आप फिर फाइट जो है वो इजिली जो है वो जीत सकते हो। तो इट्स लाइक कि जो यामाते इस समय वो स्नेक का एक हेड है। अगर आपने स्नेक के हेड पे काबू कर लिया है ना, तो स्नेक की पूरी बॉडी जो है वो आपके काबू में आ जाएगी। तो बस आपको उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको ना थोड़ा सा बेट आउट कराना पड़ेगा उनको। उनके पास स्किल्स ऐसी है कि वो डैमेज डिश आउट कर सकते हैं, इसलिए टीम जो है थोड़ा सा संभलते रहेंगी। जी बिल्कुल, लापू गॉड मौजूदा है, यहाँ अभी भी डैमेज देते हुए जा रहे हैं, पीछे हटे हैं थोड़ा सा। और टीम जो है यहाँ पे वेट कर रही है कि एक अच्छा सा सेट लगाने के लिए। देखते हैं क्या होने वाला है। लॉर्ड यहाँ पर अभी तक किसी की तरफ से स्टार्ट नहीं हुआ है लॉर्ड डांस, बट समहाउ ऐसा मतलब प्रतीत हो रहा है कि मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर होदिनी छुपे बैठे हैं। यहाँ पर ईशनशिन या फिर द फीनिक्स सोलो का पराठा हुआ होदिनी टूट पड़े हैं और किल स्कोर करनी होनी माल के ऊपर, लेकिन वो मिस्टेक का शादा वहां पर रिवेंज लेने की कोशिश होदिनी के ऊपर, बट होदिनी स्टिल सरवाइव कर रहे हैं, सस्टेन कर रहे हैं, पीछे हटे हैं टॉर्टोइस पोजीशन से। यहाँ पर थोड़ा सा स्लो डाउन करने की कोशिश, होदिनी तो निकल गए, लेकिन यहाँ पर जो है लापू गॉड फंस गए। समान फोर्स फॉलो माता हुआ हैरत ऑन टू द डबल किल, यहाँ में ते कर्ज लॉर्ड को गिराए हैं ट्रिपल किल के लिए जाते हुए। यहाँ पर जीरेजी के ऊपर उसके पास मौजूद है वो आई एम ऑफेंडेड, लेकिन के हटने के ही जो है पीछे हटना ही अच्छा डिसीजन था वहाँ पर, क्योंकि आपके जो हीरोज है, आपके जो प्लेयर्स है वो अभी डाउन है, तो उस हिसाब से आप फाइट तो ले नहीं सकते। बट राइट नाउ वो लॉर्ड मिला है, साथ ही साथ होदिनी का जो सेट्स आ रहा है ना वो भाई लाजवाब आ रहा है। जिस तरीके से वो इनिशिएट कर रहे हैं फाइट को, इंडीड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिशिएशन इस गेम पे उनकी तरफ से। जी बिल्कुल। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा रूबी का भी आप बोल सकते हैं कि उतना पिक वो दे नहीं रहे। अगर पहले की रूबी होती वो सस्टेन वाली, तो ज्यादा वो जो बोल सकते हैं कि कंट्रीब्यूट कर सकती थी टीम पे। अगर यहाँ पे रूबी की जगह फाइटर नहीं होते, यहाँ पे एमएम होते, तो स्थिति थोड़ी सी अलग हो सकती थी। उनको जो बर्स्ट की जो कमी आ रही है ना वो पूरी हो जाती। जितना ज्यादा यहाँ पे फ्रंट लेन कर रहे हैं लापू उतना नहीं कर पाते। फिर अगर मॉस्को वगैरह होते तो वहां पे अच्छा खासा डैमेज मिलता हुआ दिखेगा, लेकिन इस बार इनिशिएट करने के लिए अंदर गए थे उड़ीनी, उनको फिनिश ऑफ किया जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। यहाँ पे मौजूदा है, डैमेज देते हुए दिखेंगे उधर। और चलिए पीछे हटे हैं, पोक जो है थोड़ा सा वहां से आता हुआ दिखा उनकी तरफ से। और यहाँ पे मिड का जो टरेट है वो बचाने का प्रयास कर रही है टीम, लेकिन स्ट्रक्चर उसके ऊपर बात करते हैं। टॉप का टरेट ऑलरेडी जा चुका है, इनविडेड टरेट आपका ऑलरेडी बचा है सिर्फ। और लॉर्ड अभी जो है फिनिश अप हो जाएगा तो गेम और ज्यादा स्लो, थोड़ा लेट गेम की तरफ जाएगा। और हैरियत का जो डैमेज है ना अभी इतना ज्यादा आने लगा है, उनका जो आइटमाइजेशन है वो कंप्लीट होने वाले हैं। उसके बाद और ज्यादा जो डैमेज है वो आपको देखने को मिलेगा, वो और ज्यादा पोक आपको देखने को मिलेगा। तो उनको रोक पाना फिर कोई मुश्किल रह जाएगा। आपके पास कोई ऐसा हीरो नहीं है जो उनको सीधा रोक पाए। आपके पास गॉड जरूर है, आप उनसे वो डैमेज जरूर दे सकते हैं, लेकिन गॉड को वो फ्री स्पेस मिलेगा नहीं। और उनको जो है इजिली जो अल्टीमेट करने का मौका उनको इजिली से नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए ना कि जो हुडीनी है वो कहीं ना कहीं मार करके बैठे कि गॉड को मार करना है, उनको निकालना है किसी भी तरीके से।
और उनके पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो सीसी व्यू ने अपने अल्टीमेट में। देखते हैं क्या होने वाला है। फिलहाल के लिए तो फ्यूरी द फीनिक्स आता हुआ होदिनी यहाँ पर फिर से पकड़ने की कोशिश, उनीमारू के ऊपर कूद पड़े हैं ब्रेविश फाइटर का इस्तेमाल करते हुए, यहाँ पर टेक डाउन करेंगे उनीमारू को। पीछे से फॉलो अप आता हुआ यहाँ पर यामित की तरफ से जमान फोर्स पॉप हुआ है और ये फाइट कंटिन्यू होता हुआ रेजी यहाँ पर आ चुके हैं। एम पेंडेंट का इस्तेमाल करेंगे लेकिन उनको बहुत ज्यादा बर्स्ट पड़ता हुआ, बहुत ही कम एचपी यहाँ पे कर्स भाग निकले हैं। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके का डैमेज लापू गॉड को भी सहना पड़ा है वहां पे। कर्स इंच हेल्थ पे भागे है भाई, वो कहीं ना कहीं फंसने वाले थे वहां पर, थोड़े थोड़े में बचे थे। लेकिन होदिनी ये एक नाइटमेयर बन गए अभी आप बोल सकते हैं उनीमारू के लिए। जब जब उनीमारू बुश चेक करने के लिए जा रहे हैं तब तब ये उनके ऊपर कूद रहे हैं यहाँ पे। मतलब एक तो आप ये कीजिए कि आप कर्स्ट के साथ ही घूमिए, अगर आप कर्स्ट के साथ नहीं घूम रहे तो फिर होदिनी से बचना मुश्किल है। वो टारगेट कर रहे हैं पूरा, मतलब उनको सीधा आप देखेंगे बुश पे छुपे रहते हैं, या तो उनकी टारगेट में आप बोल सकते हैं फ्लाई होते हैं या फिर उनीमारू होते हैं। तो बिल्कुल। और अब जो है ना थोड़ा सा गेम डिफेंसिव की तरफ जा चुका है। टीम मैवरिक जो पहले बोल सकते हैं कि अच्छा खासा डैमेज आती हुई दिख रही थी, वो इनिशिएट करती हुई दिख रही थी, फाइट एग्रेसिव खेल रही थी, तो थोड़ा सा डिफेंसिव अप्रोच की तरफ आ चुकी है। लॉर्ड के लिए यहाँ पे फाइट होती हुई दिखी कि लॉर्ड लेने का प्रयास करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले लॉर्ड डांस यहाँ पे। और देखिए ये मिनियंस जो बार बार क्रिएट कर रहे हैं ना वेव, वो क्लियर आउट करने के लिए टीम को वापस पीछे आना पड़ रहा है, जिसके कारण ये फाइट जो है थोड़ी और इंटरेस्टिंग बनती हुई जा रही है अभी। और ये देखिए फाइट होता हुआ जा रहा है, कोशिश रहने वाली है। फिर दोबारा से की तरफ जाएंगे, रिकॉल का यहाँ पे जो है बैकअप हुए हैं, हील करके आना चाहते हैं एक फ्रेश फाइट के लिए। दूसरी साइड की बात की जाए ना, अभी टीम बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर रही है। स्लो पुश ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है टीम ने। देखिए बॉटम लेन पे भी वो स्टैक हो रहे हैं मिनियंस, टॉप लेन पे भी वो मिनियंस जो है वो धीरे धीरे स्टैक हो रहे हैं, जिसके कारण स्लो पुश स्टार्ट हो जाता है। और ये तभी किया जाता है स्टेज जब आप लॉर्ड लेने के लिए टीम जो है फाइट लेती है, तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी रहती है, जिसके कारण वो स्लो पुश आता हुआ दिखेगा। और इसी के साथ आप अल्टीमेट का इस्तेमाल, दिक्कत हो सकती है, थोड़ा बच के संभल के खेलना पड़ेगा। अल्टीमेट पेट आउट हो चुका है, बहुत बढ़िया। अब आपको पीछे हटना है, ज्यादा डैमेज नहीं लेना। एक अच्छा अल्टीमेट उनकी तरफ से यहाँ पे चेंज कर सकता है, मिस्टिकस का इस्तेमाल किया जाएगा डैमेज देते हुए। वो यहाँ पे बचते हुए निकलना चाहते हैं, लेकिन कितनी देर तक, उड़ी नहीं उनको। ये फाइनली ये हथकड़ी लगती हुई जाएगी, मौत की हथकड़ी यहाँ पे पहना दी गई है। कोशिश करना चाहते हैं आई एम ओवरनेट का इस्तेमाल रोकने का, ये देखिए प्रयास किया जाएगा बढ़िया तरीके से। ट्राइंट रेंज, 4 बंदे धराशायी, अकेले बचेंगे, पोक आएगा और ये खत्म होते हुए जा रहे हैं। एक कोशिश और खत्म हो जाएंगे। पूरी टीम वाइप आउट 100%। यहाँ पे टीम मैवरिक खेलती हुई, उसी के साथ मिनियंस आ चुके हैं। क्या ये आखिरी घड़ी हो सकती है? क्या ये अंत की तरफ जाते हुए दिखेंगे? क्या ये टीम वापस आ सकती है? इस मिनियन से पहले ये टर्रेट अभी भी खड़े हुए हैं, 10 सेकंड का वो समय है। आई थिंक यहाँ पे वो बचाया जा सकता है, कोशिश हो सकती है। आ चुके हैं लापू लापू ऑलरेडी, और फाइनली मिनियंस के जो स्पॉन है वो भी आ जाएगा सही समय पे, जिसके कारण टीम जो है वापसी लॉर्ड की तरफ जाती हुई जाएगी। लॉर्ड ले लिया जाएगा, लेकिन नहीं, क्योंकि शिफ्टिंग क्लाउड से ही है, तो कहीं ना कहीं क्लाउड की मदद से आ सकते हैं यहाँ पर। और देखिए क्लाउड की मदद से बहुत जल्दी रोटेशन उनको मिल गया, साइड लेन रोटेशन आपको जल्दी मिल जाता है, तो लॉर्ड यहाँ पे नहीं बनेगा। या तो लॉर्ड था या तो इनोवेटर था, आपने इनोवेटर छीना, वहाँ पर स्पेशल माइग्रेशन कनेक्ट होता हुआ, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टन देते हुए, फंसते हुए यहाँ में बहुत ही कम एचपी में डैश करके पीछे जाने की कोशिश, लेकिन इस बॉल लापू गॉड उनको एलिमिनेट करेंगे और साथ ही साथ आगे बढ़ेंगे डबल किल के लिए। देखते हैं क्या करने वाले हैं, डबल किल सिक्योर करेंगे। विंटर सोल्जर पर से है स्लेन होते हुए यहाँ पर काज़िम, लेकिन होदिनी नाइटमेयर है आज उनीमारू को यहाँ पर डाउन करते हुए, लेकिन यहाँ पर होदिनी को रिवेंज लेने की पूरी कोशिश उनके ऊपर। देख सकते हैं होदिनी बच के निकलने की पूरी कगार पे, लेकिन वो भी स्टिक का यहाँ पर आता हुआ उन्हें बस्ट आउट करेगा। सिर्फ अकेले यहाँ पर बच गए हैं विंटर शैडो और निचली भाग में मिनियंस का प्रेशर, लेकिन उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर टूट पड़े बाक्शे के ऊपर, टोटस पोजिशन का इस्तेमाल करके पीछे हटते हुए कैनन मिनियन यहाँ पर सिर्फ बचा है, तो लॉर्ड लेना ही लाजमी रहेगा यहाँ पे टीम मैवरिक के पास। लेकिन अभी भी रिट्री होल्डर विंटर शैडो वो बचे हैं, वो अगर आ गए पीछे से और अगर एक रिट्रीब्यूशन लग जाता है उनकी तरफ से, तो मैच खत्म। और आपके पास डैमेज डीलर भी नहीं है लॉर्ड मेल्ट करने के लिए, और उनकी टीम वापसी कर चुकी है, तो आपको भी थोड़ा सा पीछे हटना चाहिए, उनीमारू का वेट करना चाहिए। लेकिन उनीमारू ये कॉन्स्टेंटली टारगेटेड हो रहे हैं होदिनी से। तो बिल्कुल
हुडीनी जो है ना, उन्होंने मान लिया है कि उनको पता है कि दोस्त कुछ हीरोज है, बस उन्हीं को ही टारगेट करना है आपने। लेकिन ये रेड ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये लॉर्ड को लेके जाएगा और उसी के साथ बादशाह वो लॉर्ड चुरा के लेके गए हैं। और ये देखिए यहाँ पे यामते वो मौजूदा रहेंगे, लापू गॉड वो शील्ड चुराना चाहते हैं, कोशिश रहेगी और टीम बचते हुए इजीली निकल जाएंगे। बढ़िया इनिशिएशन उनकी तरफ से आता हुआ, रोकेंगे, बचाया जाएगा। लापू लॉर्ड जो है वो धाराशायी हो चुके हैं। वाइजर्स मौजूदा है, पीछे की तरफ डैमेज देते हुए देख सकते हैं। उडीनी वहां पे मौजूदा रहेंगे, मिड का टरेट यहाँ पे ले लिया जाएगा। मिड से जो मिनियंस वो लेके आएंगे, वो फिनिश ऑफ करना चाहते हैं, क्या वो मौजूदा रहेंगे उसमें, क्या वो कामयाब होंगे? कोशिश करना चाहते हैं रोकने की, मिस्टिकस आएगा, मेल्ट डाउन करने का प्रयास, टीम आखिरी कोशिश करती हुई, लेकिन वो मिनियंस वो बेस के ऊपर प्रहार, लॉर्ड आपने लिया, लेकिन क्या फायदा उसका जब आप डिफेंस करने के लिए नहीं बचोगे। और उसी के साथ इस गेम को बेहतरीन तरीके से एंड करती हुई टीम मैवरिक इस मैच को अपने नाम बनाती हुई। मैं बिलीव ही नहीं कर सकता भाई, जो मैच पूरा का पूरा टीम वेलोसिटी स्पोर्ट्स का था यार। वेलोसिटी स्पोर्ट्स का वीक बहुत खराब चल रहा है भाई, वो एंड तक मैच लेती है, फिर भाई कुछ ना कुछ होके उनके हाथ से निकल जाता है। टीम मैवरिक लाइक स्टार्टिंग से इतना ज्यादा उनको प्रॉब्लम हुआ, ईशन जिन को वहां पर फार्म नहीं मिला था, उनकी रेड बफ छीन ली गई थी, बट वो एक सेट जो जी रेजी और लापू गॉड की तरफ से आया, और आप बोल सकते हैं फ्लाई का यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट रहा है एज अ डैमेज डीलर, एज अ बैकलाइनर। जिस पोजीशन में वो खेले हैं, होदीनी एक नाइटमेयर बने थे दोनों डैमेज डीलर के लिए। उनीमारू 4 बार गिरे और चारों के चारों बार होदीनी उनको गिराया। होदीनी ने बहुत ही एक्सेप्शनली बेस्ट खेला है यहाँ पर विद दिस लापू लापू। दैट ऑफ मेटा में लापू लापू इतना अच्छा खेलना, लाइक लिटरली बहुत अच्छा था, लेकिन उसको जो है ब्रेकआउट किया है यहाँ पर ईशन जिन, यानी कि आपके सॉरी ईशन जिन बोल दिया, फ्लाई और लापू गॉड ने। इन दोनों ने एक कॉम्बिनेशन वाला गेम खेला और आखिर में वो रिजल्ट मिला है विक्ट्री का टीम मैवरिक को। पर इसी के साथ खत्म नहीं हुआ यहाँ पर मोबा वार्मअप क्लास सीरीज एल्गैम्बो स्पोर्ट्स पे, क्योंकि 2 और गेम्स होने वाले हैं, कहीं मत जाइए। आज 5 नहीं 7 गेम्स थे, तो 7 में से एक गेम हुआ नहीं, थोड़े से कुछ प्रॉब्लम आ गई थी टीम के पास, तो इसलिए वो वॉक अवे हो गए। बट राइट नाउ 2 गेम्स और आने वाले, कहीं मत जाइए। मैं एसटीजी शिंडा इस छोटे से ब्रेक के बाद फिर से वापस आएंगे आप सभी के साथ। चलिए।
हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम वापस आ चुके हैं वार्म-अप क्लास सीरीज में एंड और एक मैच लेके देखते हैं आज हमारी टीम्स कौन होगी। आज मेरे साथ बने रहेंगे शिंद्रा। हेलो शिंद्रा, आप कैसे हो? हेलो पीची, धन्यवाद आपका इतना अच्छा इंट्रो देने का। और उसी के साथ मैं जो हूँ काफी अच्छा हूँ। और आज के ये मैचेस जिस तरीके से गए वो भी काफी अच्छे खासे जा रहे हैं। बात करें पिछले गेम की, जिस तरीके से दोनों ही टीम खेली बहुत बेहतरीन तरीके से, लेकिन इस बार यहाँ पे सामने जो टीम रहने वाली है वो भी काफी ज्यादा देखने पड़ेगा। बैड इज इन टाउन। चलिए, काफी अच्छा खासा नाम मैं कहूंगा यहाँ पे। और उनकी तरफ से बैन भी काफी अच्छे खासे यहाँ पे आते हुए सीधा फाइटर्स और एमएम के ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। ओबीएस बैन किया जाएगा, उसके साथ साथ यहाँ पे पकीतो को बैन किया गया है। क्लॉड यहाँ पे बैन होते हुए दिखेंगे। दूसरी साइड की बात करें, टीम वेलिएंट घूल्स है वो यहाँ पे रहने वाली है। और देखिए यहाँ पे अकाई बैन किया गया है। अकाई की बात करें, अभी मेटा पे सबसे फर्स्ट नंबर पे आ रहे हैं। और लाइक ये ऐसा पिक बन चुके हैं जो सबसे ज्यादा जो टीम है ना इनके बीच में फाइट करती है, तो बैन कर देगी या तो फर्स्ट पिक के लिए यहाँ पे जो है लड़ती हुई दिख रही है आपस में। पहले जूशिन हुआ करती थी, अब जो है अकाई यहाँ पे आती हुई दिखेंगे। लेकिन बैड इज इन टाउन उनकी तरफ से पहला जो पिक है वो आ चुका है। मार्शल यहाँ पे अपनाया जाएगा। वेरेनकुल की तरफ से एक काउंटर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वहां पे डिसंगेज के लिए जो है मेज का उनका आगमन होगा। उसके साथ साथ यहाँ पे एटलेस, तो ये दो स्लो डाउन जो है ना बहुत अच्छे खासे हैं। अब यहाँ पे ना वेलेंट घोल्स क्या करेंगी, बेसिकली उनका गेम प्ले क्या रहता है, जितना भी मैंने नोटिस किया है, वो डिपेंड करते हैं अपने किसी दो हाइपर कैरी की तरफ। तो लाइक वो इस तरीके का कॉम जो है वो थोड़ा सा बनाते हुए खेलते हैं कि गेम को थोड़ा डिले कराया जाए। जिसको फार्म करवाना है उसको फार्म करवाया जाए, ताकि उनका जो पीक है वो निकल के आ जाए। फिर उसकी तरफ से जो है ना वो गेम वहां पे कैरी होता हुआ दिखता है। या तो वो जंगलर की तरफ से दिखता है हमको, या तो फिर उनके जो एमएम है वो कैरी करते हुए दिखते हैं। लेकिन इस बार देखना पड़ेगा स्ट्रैटेजी किस तरह से रहेगी, क्योंकि सामने की तरफ अगर देखा जाए ना तो बहुत अच्छा खासा यूटिलिटी चुराने के लिए वो यहाँ पे आते हुए दिखेगी हमको वैलेंटीना। उसके साथ साथ क्लिंट वहां मौजूदा रहेंगे वो बर्स्ट देने के लिए। और क्लिंट यहाँ पे ले लिया, जिसका मतलब ये है कि पीची अर्ली गेम पे रोटेशन जो है हमें दूसरी लेन्स की तरफ आती हुई दिखेगी। और चलिए यहाँ पे देखना पड़ेगा, ड्रैगन का आगमन हो चुका है। 3 पे जो है यहाँ पे आ चुके हैं ऑलरेडी। अभी भी जो है यहाँ पे एमएम और हाइपर इन दोनों के ऊपर थोड़ी नजरें बनानी पड़ेगी, और ये दोनों जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओवरऑल देखा जाए कैरी पोटेंशियल जो है यहाँ पे इन दोनों के पास ही रहना वाला है। तो वेलेंकुल की तरफ से वो क्या जंगलर आता हुआ हमें दिखेगा, या फिर क्या वो एमएम आता हुआ दिखेगा जो इनकी टीम को कैरी कर पाएगा। बात करें बैड इज इन टाउन, उनकी तरफ से जो पिक्स है वो काफी अच्छे खासे यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं। अर्ली गेम मार्शल यहाँ पे जो बहुत ज्यादा अनॉय करते हुए दिखेंगे, और उसको थोड़ा सा रोकने के लिए ना यहाँ पे जो वलेर का पिक है ना वो काफी अच्छा है। क्योंकि अर्ली गेम पे वो उनको बोल सकते हैं कि थोड़ा सा जो है ना डैमेज दे सकते हैं, जिसके कारण वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएंगे और स्लो डाउन होते हुए निकल जाते हैं हर बारी। तो मार्शल के साथ यही प्रॉब्लम रहती है आपको कि अर्ली गेम बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। लेट गेम में जो है वो उनका जो थोड़ा सा बोल सकते हैं कि गोल्डन आवर के ऊपर थोड़ा गेम वहां पे निकलता हुआ जाता है। यानी कि उनकी जो रेटरी रहती है, और देखिए यहाँ पे ड्यूटिलिटी जंगलर्स के ऊपर रार होता हुआ दिखेगा। उसी के साथ लियो मोड जो है वो बैन होते हुए दिखेंगे। उसके साथ साथ अपने जो फेडरिन है वो बैन हो चुके हैं। बैड इज इन टाउन उनकी तरफ से आखिरी बैन, चलिए हैरिस बैन किया जाएगा। इंटरेस्टिंग। यहाँ पर मार्शल पिक हो चुका है, तो काफी समय हो गया हमने देखा नहीं है मार्शल गेम प्ले। बट एक बात है कि मार्शल टाइमिंग के ऊपर बहुत The बहुत immortal one इम्पोर्टेंट है। chose अगर me to यहाँ पर vanquish एटलस the थोड़े भी shadows फास्ट that होंगे तो plague बहुत this दिक्कत world. आएगी। बट बैड इन टाउन एटलस के साथ, आई मीन वैलेंटीना के साथ इज डेफिनेटली रेडी है। बट बैंड्स के बारे में बात करेंगे तो जल्दी से हैरेट, मार्क्समैन, जंगलर्स काफी ज्यादा टारगेट हुए हैं, स्पेशली टैंक जंगलर्स। तो वो काफी अच्छा रहा, क्योंकि अभी जैसे मेटा चल रही है वो डेफिनेटली बैन नीडेड है। जो स्केलिंग होती है ये टैंक जंगलर्स का काफी अच्छा होता है। बट वेरिएंट गोल्स के बारे में बात करें तो माय गुडनेस, सुयू ऐसा हीरो है जो उन्हें स्नोबॉल की सख्त जरूरत है। अगर नहीं मिलता है तो My प्रॉब्लम, kiss एंड वही grants you एनर्जी मैच करते हुए immortality हमें or हार्ली दिख death. रहा है। हार्ली काफी अच्छा पिक है, बट हार्ली के साथ यहाँ पर एक डाइव इन हीरो, क्योंकि फ्रंट लेनर्स की थोड़ी जरूरत है, तो एलिस ले चुके हैं। जी बिल्कुल, थोड़ी-सी कंप्लेन रह रही थी मेरी कि लेन कम वो जो है यहाँ पे क्लीयरिंग लेन हीरो जो है वो नहीं था, और वो आखिरी पिक एलिस का आता हुआ। वो कंप्लेन भी अब जो दूर हो चुकी है। आपके पास बर्स्ट है, आपके पास डैमेज है, आपके पास रेंज है, और आपके पास लेन क्लीयरिंग है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी साइड की बात करें एमएम के तौर पे मेलिसा आती हुई दिखेगी। ओके, काफ़ी टाइम के बाद हम मेलिसा पिक देख रहे हैं यहाँ पे पीछे।
आपके पास ऑप्शन दूसरे भी बन सकते थे, लेकिन मेलिसा के साथ जाना चाहते हैं तो कंफर्ट पिक यहाँ पे रहेगा। कोशिश रही कि जो फ्रंट चार्जिंग हीरो जैसे आप बात करें मार्शल, वो थोड़ा आगे आगे खेलने का प्रयास करते तो उनको थोड़ा रोकने का प्रयास यहाँ पे किया जाए कहीं ना कहीं। और वैलेंटीना यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं कहूंगा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ड्रैगन की अल्टीमेट भी वो चुरा सकती है, एटेस की अल्टीमेट भी चुरा सकती है, उनके पास यूटिलिटी काफी अच्छी खासी रहने वाली है। डेफिनेटली डैमेज तो थोड़ा सा मिड गेम टू द लेट गेम है, बट इसी के साथ चलिए लैंड ऑफ डॉन की तरह यहाँ पर मैच होने वाली है। पैरिस इन टाउन वर्सेस टीम वेलिंग गोल्स। वेलिंग गोल्स काफी अच्छा टीम है, यू नो बहुत बार हमने उन्हें देखा है जीतते हुए। क्या वो आज भी यहाँ पर आके वो भी स्क्रिम्स में जीत सकते हैं या नहीं? थोड़ा सा कुछ नया ट्राई कर रहे इन द गोल लेन, काफी अच्छा लगा, क्योंकि इट्स बिन क्वाइट अ टाइम दैट मेलिसा नहीं आई है मेटा पे। तो देखते हैं यहाँ पर क्या कहलाता है। एंड इसी के साथ ये देखिए विनिंग गोल स्कोर करते हुए, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सूयू, एंड उन्हें वो मिल चुका है। बिल्कुल, और देखिए साथ ही साथ ट्रेड ऑफ हमें करते हुए जाएंगे। उनको भी पता है कि सामने उनका गोलम चुरा लिया, तो चलिए हम सामने से जाके वो गोलम चुरा लेंगे ताकि वो बैलेंस आउट हो जाए। और ये अच्छी स्ट्रेटेजी। दूसरी साइड से आप थोड़ा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सामने वाले को भी पता है कि किस तरीके से काउंटर करना है आपको। और यहाँ पे देखिए अच्छा खासा पोक आता हुआ दिखेगा मेज के ऊपर। पीछे हटे अभी भी ब्लू ऑफ लेते हुए जाएंगे। सूयू लेवल 2 लेवल 3 होने के लिए तैयार हैं। दूसरी साइड की बात करें तो थोड़ा सा पीछे हटे हैं वो, एमएम के ऊपर प्रहार जरूर किया है, जिसके कारण क्लिन को थोड़ा बैक ऑफ होके खेलना पड़ेगा। और थोड़ा सा फार्म कराती हुई दिख रही है मेलिसा के पास वो बढ़िया रेंज, जिसके कारण क्लिन थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लेन को यहाँ पे विन करने के लिए। दूसरी साइड की बात करें अभी ब्लू लेते हुए दिखेंगे, ब्लू लेने का वो प्रयास कर रहे हैं हार्ली लेवल 4 होने का। और यहाँ पे सुयू उनका आगमन देखना पड़ेगा किस तरीके से आएंगे। लेवल 3 ऑलरेडी हो चुके हैं, लेवल 4 के लिए जाएंगे। दूसरी साइड की बात करें रोम रंबा वो मौजूदा है, उनकी तरफ से बहुत अच्छा मैं कहूँगा पोक आता हुआ दिख रहा है। बहुत अच्छे तरीके से ना वो मेंटेन कर रहे हैं, और लाइक उनको पता है कि यहाँ पे किस तरीके का विजन यहाँ पे देना, उनको लगातार विजन दे रहे हैं। मेज यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। हार्ले अब मौजूदा है, अब थोड़ा सा पीछे हट जाना चाहिए यहाँ पे टैंक को, क्योंकि हार्ले वहाँ पे मौजूद रहेंगे। अगर उनकी तरफ से डेडली मैजिक पड़ेगा दिक्कत हो सकती है। ऑलरेडी बेस ऑफ करा दिया गया है, मेज की तरफ से पोक आएगा रोकने का प्रयास, और अच्छा खासा उनको डैमेज पड़ेगा। और ये अच्छा खासा स्ट्रेटेजी आपका रहा कि अर्ली गेम पे आपने काफी सारे स्किल्स जो है उनकी वेस्ट करवा दिए। अब टर्टल के लिए जो टीम है वो जाती हुई दिखेगी। उधर ड्रैगन की बात करें वो बहुत अच्छी तरीके से सस्टेन किए हुए, और यहाँ पे जो है एक साइड खदेड़ दिया है एलिस को, और ये टर्टल बहुत अच्छी तरीके से मिल गया, जिस कारण वो लीड उनको मिलेगी। और ये देखिए यहाँ पे आते हुए तो ओवरऑल बात करें यहाँ पे वो काफी अच्छी तरीके से टीम वैलेंट गोल वो खेल रही है। वो देखिए लिजार्ड चुराने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो मिलेगा नहीं। दूसरी साइड मौजूदा है ड्रैगन अभी भी मौजूदा, टीम पीछे आएगी, बैकअप होना चाहती है। सुयू आएंगे, फिर दोबारा से डैमेज देते हुए दिखे, अंदर की तरफ जाना चाहते हैं और एक स्टन देने का प्रयास करेंगे। टैंक अंदर की तरफ कमिट किया है, क्या वो बच पाएंगे? कोशिश उनकी तरफ से जी बिल्कुल, और यहाँ पे बाल बाल बचते हुए निकले हैं। डेडली मैजिक आएगा मेज के ऊपर, बेसिक अटैक पड़ेगा, दिक्कत हो सकती है, उनको पीछे हटना पड़ेगा। अब यह मौका है कि आप रिकॉल कर लीजिए। आपने कोशिश करी लेकिन वो कामयाबी हासिल नहीं हुई, लेकिन एमएम के ऊपर प्रेशर इस समय बहुत बढ़िया वो बनाया हुआ है। ईएक्सपी की बात करें वो भी बेहतरीन तरीके से मेंटेन कर रहे हैं, तो अपने अपने लेन्स बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन कर रहे हैं। तो ओवरऑल बात करें जो प्रेशर है वो सेम रहने वाला है। स्ट्रक्चर के ऊपर अभी किसी के ऊपर बढ़त नहीं है, फार्म के ऊपर अभी जो है वो फाइट चल रही है, लेकिन नीचे यहाँ पे पकड़े जाएंगे। और उसी के साथ वो लेट रोटेशन, जिसके कारण इजिली मेलिसा ने वहां पे मेल्ट डाउन किया क्लिंट को और उनको भेजा रिकॉल स्पॉन की तरफ। थोड़ा सा ओवर एक्सटेंशन आ रहा है यहाँ पर बैट्सर के हाथ से। आई फील लाइक इवन दो यू आर अ मार्शल, यहाँ पर इतना अग्रेसिव खेलने का कोई ज़रूरत नहीं है। टॉप लेन से एक एडवांटेज लेने के लिए चाहते हैं टीम वेलिंग गोल्स। एरोम्बा टॉप लेन पे अभी उन्हें लग रहा है कि बॉटम लेन पे थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होगा, सो रोटेशन आ रही है। बट ओह माय गुडनेस, डैमेज तो है सुयू पे। यहाँ पर बैट्सर बाल बाल बच के निकले, बट बॉटम लेन पे पोक आते हुए दोनों मार्क्समैन में काफी ज्यादा डिफरेंस है, बट आई काइंड ऑफ देखना पड़ेगा कैसा सेटअप आने वाला है यहाँ पर। ये बिल्कुल थोड़ी कोशिश यहाँ पे रहने वाली है। मार्शल दिक्कत में पड़ सकते हैं, अंदर की तरफ जाते हुए दिखेंगे, लेकिन नहीं बैक ऑफ हो जाएंगे। उनको भी पता कि यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, ज्यादा अंदर जाएंगे तो दिक्कत रहेगी। हाल वहाँ मौजूदा टॉप लेन की बात करें तो ड्रैगन वहाँ सस्टेन करते हुए जाएंगे। एलिस बहुत अच्छी तरीके से उनको मेंटेन करते हुए पीछे जाएंगे। और ये देखिए डैमेज आता हुआ लगातार मेलिसा की तरफ से, वो पोक
जो रेंज का एडवांटेज है ना उनकी तरफ बहुत बढ़िया। मेज की तरफ से आएगा जरूर, डेडली मैजिक मारने का प्रयास कर सकते हैं। अरे ज्यादा अंदर की तरफ जाएंगे दिक्कत हो सकती है। अभी भी मौजूदा रहेंगे, अंदर की तरफ गए हैं, डैमेज देते हुए देखेंगे और ये चाहेंगे आखिरी प्रयास की जाते जाते कुछ डैमेज दे जाए, और लेकिन वो पी गेमिंग वहां मौजूदा है, डैमेज देती हुई दिखेंगी उनको और अच्छा खासा डैमेज दिया है। रोकने का प्रयास करना चाहते हैं, सेलेस्टियल टाइटन वहां पे मौजूदा है और उसी के साथ ट्विन लाइट वो वहां पे बचते हुए निकले, डैमेज देते हुए जाएंगे ड्रैगन की तरफ से। क्या यहाँ पे ताराशाह जी नहीं, एक एचपी बचते निकलेंगे यहाँ पे मार्शल। अच्छी स्थिति नहीं है आपकी, इतने बार आपने कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो सफलता अगर आपको नहीं मिलेगी तो दिक्कत हो सकती है। और देखिए ओवर एक्सटेंशन यहाँ पे किया जिसके कारण एक और किल मिलेगा। सुयू यहाँ पे आएंगे, यानी कि कियोशी मौके का फायदा उठाया, उस ओवर एक्सटेंशन को पनिश किया जिसके कारण एक किल फाइनली उनको मिलेगा। लेकिन अभी स्ट्रक्चर के ऊपर बढ़त वो हासिल करने का जो प्रयास करना चाहती है टीम उनकी तरफ वो रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो है स्ट्रक्चर के ऊपर कोई भी बढ़त हासिल नहीं हुई है आपकी। अभी जैसे मिड गेम पहुंच रहेंगे और 1-2 मिनट के अंदर टरेट्स खोलने लगेंगे टीम वेरिएंट बुल्स। उनके हाथ पे थोड़ा बहुत है चांसेस विद द मेलिसा, बट बैडीज इन टाउन यहाँ पर एडवांटेज लेते हुए किल्स और उनकी गोल्ड का। तो देखते हैं यहाँ पर क्या करेंगी। अभी भी थोड़ा सा टाइम है फॉर द टर्टल, तो मे बी उसके पहले एक छोटा सा गैंग मिड लेन पे प्रेशर बैचर बस एक दूसरे के बीच में से एक दूसरे निकलते हुए। यहाँ पर मेलिसा काइंड ऑफ रियलाइज कर चुकी है कि अभी इज द टाइम टू प्ले इट सेफ, फार्म अप कर रहे, सेफ फार्मिंग अप वेल। उसका जैसे देख रहे हैं हम लोग ऑलमोस्ट DHS हो गया है एंड आई थिंक और एक मेन आइटम चाहिए होगा एट दिस पॉइंट। वो टॉपलिंग पे छोटा सा गैंग कोशिश रहेगी, पी गेमिंग वो सस्टेन करना चाहती है, डेडली मैजिक आएगा और उसी के साथ पीछे हटना पड़ेगा। कियोशी बहुत ही कम पे लेकिन वो बच के निकल जाएंगे। बहुत अच्छा उनका एंगेज यहाँ पे आया, कोशिश करना चाहते थे वो किल लेने की लेकिन नहीं, उनको नहीं मिलेगा। और ये देखिए डिसंगेज के प्रयास यहाँ पे कोशिश करते हुए, लेकिन मार्शल मौजूदा है, बहुत ज्यादा डैमेज देंगे, गलती में पड़ सकते हैं, ये गलत। यहाँ पे रोटेशन लेंगे 3 बंदों के बीच में, ड्रैगन मौजूदा है, ब्लैक ड्रैगन फॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल होगा, मेलिसा वहां मौजूदा रहने वाली है, डैमेज देते हुए देखेंगे, अच्छा खासा डैमेज उनकी तरफ से आएगा और वो बचते हुए निकलेंगे। कोशिश रहने वाली है, क्लिंट मौजूदा है, फ्लिकर इस्तेमाल करते हुए जाएंगे वो किल लेते हुए और वो किल उनको भी मिलेगा। टीम इस समय धाराशायी हो चुकी है, वेन गोल उनकी परेशानी बच चुकी है। कियोशी मौजूदा लेकिन डबल किल यहाँ पे बचते हुए जाएगा। बैडीज इन टाउन इस समय आ चुकी है यहाँ पे डोमिनेट करने के लिए। वेलेंज गोल्स वो बुरी तरीके से तारसनेस होती हुई, उनके पास वो जवाब नहीं है अर्ली गेम पे। कोशिश अच्छी थी उनकी तरफ से, आ रही थी, प्रयास कर रहे थे, लेकिन मिड का वो टरेट यहाँ पे टूटेगा जिसके कारण मार्शल जो है वो बहुत ज्यादा नॉय इस समय बन चुके हैं। और यूटिलिटी की बात करें तो वैलेंटिना वो भी मौजूदा है चेंज टुगेदर लगाने के लिए। चल यहाँ पे प्रयास करेंगे, उनको मिलेगा। स्ट्रक्चर की बात करें, अभी भी स्ट्रक्चर है यहाँ पे जो है टीम बैडीज इन टाउन वो अब एडवांटेज में, क्योंकि मिड का टरेट आपका जा चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट टरेट जो है वो रहता है मिड का, वो जाने जो है दिक्कत आपको होती हुई दिखेगी। दूसरी साइड पे मार्शल के ऊपर रोकना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं, अंदर की तरफ जाएंगे लेकिन क्लिन की तरफ से वो पोक आता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है आपको, लाइक ऐसे हीरोज आपको उठानी चाहिए तो थोड़ी सी दिक्कत ना दे। अगर गॉड वगैरह होता मिड लेन पे तो आपकी स्थिति थोड़ी सी अच्छी हो सकती थी। यस डिसंगेज के लिए आपने लिया है लेकिन वो स्किल सेट अगर ढंग से ना पड़े ना दिक्कत होती है आपको। कोशिश रहेगी जरूर, यहाँ पे देखिए मारने का प्रयास किया जाएगा, सुयू अंदर की तरफ घुसेंगे और पीछे की तरफ आएंगे, अच्छा खासा स्टन जरूर पड़ेगा, आले को बचते हुए निकले हैं और इसी के साथ ब्लैक ड्रैगन फॉर्म में आएंगे अल्टीमेट लगाते हुए। बढ़िया पकड़ा मार्शल यहाँ पे धाराशायी, ये अच्छा मौका हो सकता है, अंदर की तरफ जाना चाहते हैं, एमएम की तरफ से वो डैमेज आता हुआ दिखेगा लेकिन वो रेंज जो थी क्लिन की तरफ से वो बढ़िया, डैमेज उनकी तरफ से बढ़िया। तो कोशिश यही रहेगी, फर्स्ट किल काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं और ये मिड का टरेट निकालने का प्रयास करना चाहते थे चुपके से लेकिन नहीं, पीछे हटा दिया जाएगा। एलिस का वो पिक ना काफी अच्छा खासा यहाँ पे साबित हो रहा है जिसके कारण एओई जो है उनका काफी बढ़िया तरीके से पड़ रहा है और बहुत ज्यादा स्लो भी मिल रहा है। तो ये अच्छी खासी पिक है यहाँ पे एलिस की। अगर एलिस यहाँ पे नहीं होती ना तो वेलिन घूल उनके पास अच्छा खासा मौका रहता, लेकिन वो एलिस पिक उनको कहीं ना कहीं दिक्कत दे रहा है जिसके कारण वो पुश नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये बन जा रही है कि एलिस वहाँ पे आ जाती है, कोई भी लेन पुश करने की बात हो तो वहाँ पे डिफेंड करने के लिए उनको रोकने का प्रयास जरूर किया जाएगा। मेज वहाँ पे मौजूद है, इस बार एलिस को अकेले पकड़ेंगे, बिल्कुल अटैक किया जाएगा, शट डाउन दिया जाएगा कियोशी के थ्रू। लेकिन दूसरी साइड आपको देखनी पड़ेगी क्योंकि बॉटम लेन पे वो वहाँ पे पुश करते हुए दिख रहे हैं, तो कोशिश यही रहेगी कि फटाफट से एक और टरेट के ऊपर कोशिश ये लीड ली जाए और बाकी लोगों को डिस्ट्रैक्ट किया जाए। मार्शल वहाँ मौजूदा रहेंगे, आते हुए दिखेंगे, कोशिश रहेगी क्योंकि वो टरेट बचाने की आई डोंट थिंक वो बचा पाएंगे। दूसरी साइड की बात करें क्लिंट, वो भी टरेट निकालना चाहते हैं, सेकंड टियर का टरेट वो मिल जाएगा, ट्रेड ऑफ हो चुका है यहाँ पे टरेट्स का।
और अभी भी बढ़त हासिल यहाँ पे मैं कहूंगा टीम बैड इज इन टाउन उनकी तरफ से रहने वाली है। वेलेन गुल वो कोशिश कर रही है, वो आंसर फाइंड कर रही है, लेकिन काफी थोड़ा सा उनकी तरफ से ना पीछे रह रही है वो। और वो कहीं ना कहीं वो गैप थोड़ा सा नजर आ रहा है टीम के बीच में। लेकिन अच्छी बात ये है कि लेट गेम में मेलिसा जो है ना उनका डैमेज आ जाएगा। क्लेंट जो अभी इतना ज्यादा पॉप अप कर रहे हैं ना, वो फिर कहीं ना कहीं उनको बैकअप होना पड़ेगा, क्योंकि मेलिसा फिर मेल्ट कर जाएगी जब उनका 1080 कंप्लीट होगा। चांसेस तो है, बट बैड इज इन टाउन 9 किल्स के साथ यहाँ पर स्किल से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स के लिए खेल रहे हैं। ये देखिए लॉर्ड आ चुका है, पहला लॉर्ड है, एंड ये लॉर्ड के साथ हमें देखना पड़ेगा। मेलिसा का डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा डैमेज है मॉडल्स के साथ, बट क्या यहाँ पर पी गेमिंग घुसेंगे? वेट करना चाहते हैं, पीछे हटे हैं, मार्शल आ चुके हैं और ये देखिए सुपर एंगेज करते हुए दिखेंगे। लेकिन चेंज टू पैदर एक ड्रैगन जाएंगे इंदर की तरफ, गोल्डन आवर का इस्तेमाल रोकने का प्रयास, क्या वो बच पाएंगे? कोशिश अच्छी है, फिर दोबारा रिवर्स चेंज को इधर आएगा, लेकिन वो डैमेज वो फर्स्ट यहाँ पे आता हुआ और उसी के साथ टीम जो है ऑलमोस्ट वाइप आउट होती हुई जाएगी। केवल यहाँ पे हाले बचेंगे और मैच एकदम से चेंज हो गया। वो टेबल यहाँ पे टर्न अप हो चुका है। जिस तरीके से एटलस यहाँ पे आए, काबिल तारीफ रोम्बा, क्या बेहतरीन तरीके से उन्होंने अल्टीमेट मारा। वो 4 बंदे एक साथ पकड़े उन्होंने, अपनी टीम के लिए वो सेट बनाया, जिसके कारण उनकी टीम ने वो 4 बंदों को धाराशायी किया और गेम को पूरा बदल दिया। डेफिनेटली लुक एट दैट, क्या ही सेट आने मिला, वो भी विद द एटलस। बराबर टाइम से वो लोग पकड़े गए एंड इसी के साथ लेन ओपन हो रहे हैं यहाँ पर। और एक बार बैक पर ट्राई करेंगे फॉर अ गोल्डन आवर। अभी सबके पास अल्टीमेट है। बैरिंग टाउन के बारे में बात करें, बट एट द सेम टाइम गेमिंग बूथ के हाथ में भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज अभी बढ़ते जा रही है। उनका जो ये छोटा सा ओपनिंग मिला है इज रियली लुकिंग गुड, बट एट द सेम टाइम दैट इज इन टाउन, अभी उन्हें इनहिबिटर्स खोलना है। तो बिल्कुल, लेके देखिए यहाँ पे कियोशी के ऊपर धाराशायी करना चाहते हैं, बचने का प्रयास करना चाहते हैं, अरे बच जाएंगे वो। माय गॉड, व्हाट अ प्लेयर मैन दिस कियोशी का। और फिर दोबारा यहाँ पे अल्टीमेट लगेगा, गोल्डन आवर का इस्तेमाल। एलएस यहाँ पे अल्टीमेट का इस्तेमाल करते हुए रोकना चाहती है, टावर के अंदर घुसेंगे लेकिन ज्यादा इंगेज हो सकता है, बैकअप होना पड़ेगा। और वहां पे देखिए डेडली मैजिक लगाया हार्ले ने, और कियोशी ने क्या बढ़िया तरीके से उसको बोल सकते हैं कि बढ़िया तरीके से बचे, वहां पे उसको काउंटर किया बहुत अच्छे तरीके से। और बहुत जल्दी से होता भी नहीं, वो बहुत हार्ड रहता है, इतना इजी नहीं रहता है। सही टाइमिंग आपकी वो जो है मैटर करती है वहां पर, और बेहतरीन तरीके से वो करके दिखाया। अभी ले तारीफ उस बंदे की यहाँ पे। बेस यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत दे रही है, उसी के साथ टीम वेलिएंट गोल्स पूरी की तरह तबाही मचाते हुए विक्ट्री उनके हाथ पे। क्या ही मैच हमें देखने मिला यहाँ पर, एक के बाद एक। इवन दो एटलस का उतना ज्यादा डेफिनेटली देयर वर गुड सेटअप्स एज वेल, बट फिर भी उनके जो स्लोज थे वो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लगे। अपना काम अच्छे से किया फॉर बैट्सर एज वेल, जो ये मार्शल पे है, उन्होंने अच्छे से सेट भी दिया था, बट वही दिक्कत आ गई कि उनके जो हीरोज है जैसे हार्ली हो और इवन एज रैग्नार जो क्लिंट है, वो बराबर टाइम से स्केल अप नहीं हुआ है। एंड डेफिनेटली फ्लिकर से ज्यादा यहाँ पर प्यूरिफाई पे खेलना चाहिए, तो मे भी बच सकते थे। और लाइक बहुत अच्छा तरीके से यहाँ पे गेम को एग्जीक्यूट किया। ड्रैगन की बात की जाए, उनको एमवीपी मिलेगा और उनकी तरफ से बहुत बेहतरीन गेम प्ले। वायलेस को गैप दिया उन्होंने, जिसके कारण ना उनको वो टीम फाइट पे आए मिड लेन की तरफ। मार्शल बहुत ज्यादा मैं कहूंगा कि दिक्कत दे रहे थे। मेज की तरफ से भी अगर बात की जाए तो मेज ने बहुत बेहतरीन तरीके से खेला वाले गेम, बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया उस गेम को, और उसी के साथ इस गेम को विक्ट्री की तरफ ले जाते हुए गए। लेकिन मजा आ गया ये गेम देख के पीछे। लाइक वो एंड में जो उन्होंने इम्यून किया ना कियोशी ने, बहुत ही बढ़िया तरीके से, लाइक एकदम चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस जिसको मैं बोलता हूँ। लेकिन अभी के लिए यहाँ पे लेना पड़ेगा एक ब्रेक। रिव्यू सज्जनों, लेंगे आप सभी से एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं आपको नेक्स्ट मैच के लिए। कई मैच जाइएगा, नेक्स्ट मैच में और भी ज्यादा ऐसे जो तड़कते भड़कते हैं वो क्लचेस आपको देखने को मिलेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
स्वागत है देवी सज्जनों आप सभी को अलगैम्बो ई स्पोर्ट्स के मोबा वार्म अप क्लास सीरीज में। मैं एसटीजी में साथ रहेंगे शिंदा फॉर द लास्ट गेम ऑफ द नाइट। उससे पहले एक छोटा सा आपको मैं एक इन्फो देना चाहता हूँ, एक अनाउंसमेंट कि आज जो मैच नहीं हो पा रही थी, उस मैच में एक टीम को बैन किया गया है और उस टीम का नाम है सोल्स्टाइस। सोल्स्टाइस को किस लिए बैन किया गया मैं बताना चाहता हूँ। सोल्स्टाइस अपने टाइम पे आई थी गेम खेलने के लिए, लेकिन उनकी सामने वाली टीम जो है वो लेट से आई थी। लेकिन कुछ प्रॉब्लम हुआ था जिसके कारण वो लेट से आई थी, और जब उन्होंने बताया तब सोल्स्टाइस ने वहां पर इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर दिखाया, जिसके कारण जो है उनकी तरफ से मिसबिहेव किया गया दूसरे कैप्टन को, और साथ ही साथ हमारे कुछ एडमिन्स को भी जो है मिसबिहेव करने लगे थे वो, जिसके कारण अभी उनके ऊपर बैन लगा है। ऑब्वियसली हम स्ट्रिक्टली एक्शन लेते हैं क्योंकि बेसिकली आप एक ई स्पोर्ट्स टीम हो, आपको एक डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ना है। हर एक चीज में डिसिप्लिन बहुत ज्यादा माइने रखता है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो ई स्पोर्ट्स हो, चाहे आप कोई भी गेम खेल रहे हो, डजंट मैटर। अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहे हो तो फिर यू आर गोइंग इन अ डिफरेंट वे। तो इसीलिए जी बिल्कुल। ये रिएक्शन लिया गया है, आई मीन ये एक्शन लिया गया है अलगैम्बो स्पोर्ट्स की तरफ से कि सोल्स्टाइस को जो है बैन कर दिया जाएगा अभी कुछ दिनों के लिए। साथ ही साथ नहीं, आई थिंक एसटीजी यहाँ पे परमानेंट बैन किया गया है यहाँ पे। जी 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 बिल्कुल, फुल एंड फाइनल कर दिया गया है, क्योंकि आप किसी से भी यहाँ पे, हमारा एक ही रूल रहता है यहाँ पे, ओपन आर्म से हम वेलकम करते हैं, लेकिन कोई भी टीम यहाँ पे मिसबिहेव करेगी तो उसको ऐसा यहाँ पे जो है पनिशमेंट मिलेगा, और ये फुल एंड फाइनल यहाँ पे रहता परमानेंट बैन यहाँ पे उनको मिला है। और बाकी एक ये तो थी एक बहुत ही मतलब इन्फो वाला खबर, लेकिन अभी एक मजेदार वाला खबर लाते जो आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। जितने भी सारे यहाँ पर मोबा प्लेयर्स है वो तो यहाँ पे मजे कर ही रहे थे, लेकिन अगर आप दूसरा मोबा भी खेलते हो यानी कि एचओके खेलते हो, तो फिर आपके पास चांस है खुद को शाइन करवाने का, क्योंकि अलगैम्बो ई स्पोर्ट्स होस्ट करने वाला है अपना पहला एचओके स्क्रिम्स। यस गाइस यू हर्ड मी राइट। अलगैम्बो ई स्पोर्ट्स जो है सिर्फ अभी मोबा के ऊपर औपचारिकता नहीं रखेगी, बल्कि वो आगे भी बढ़ेगी। मोबा 5v5 के साथ साथ जो है वो दूसरे मोबा यानी कि एचओके को जो है उसके भी कुछ टीम्स को स्क्रिम्स खेलने का मौका देने वाली है, और शायद से फ्यूचर में उनका टूर्नामेंट भी आ सकता है एचओके को लेकर। तो अगर आप एचओके खेलते हैं और अगर आपके पास अपनी टीम है तो कृपया करके जो है डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कीजिए अलगैम्बो स्पोर्ट्स का, ताकि आपको वो इन्फो मिल जाए कि कब होने वाला है। और मुझे पता है कब होने वाला है, मैं बता नहीं, ट्यूसडे होने वाला है और हमें टीम चाहिए। तो अगर कोई टीम इंटरेस्टेड है टू ज्वाइन द स्क्रिम्स तो आप लोग वेलकम हो अलगैम्बो स्पोर्ट्स में। और साथ ही साथ अगर आप एचओके खेलते हो या फिर मोबा खेलते हो तो आप अलगैम्बो डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करके अपनी टीम वहां पे भी ढूंढ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मोर देन 1000 मेंबर्स है। तो भाई 1000 मेंबर्स में कितने सारी टीमें बन जाएगी, नहीं सुनना भाई? बस टेक्स्ट करो, टीमें है। जी बनाओ, बिल्कुल, दोस्ती बनाओ, गेम खेलो, मजा आएगा भाई। क्योंकि इन दी एंड जीत किसकी होगी शिन्ना भाई? मोबा की होगी दोस्तों, मोबा जॉनरा की ही जीत होगी। और इसी के साथ आज के ये मैचेस यहाँ पे चलते हुए चलेंगे ड्राफ्ट की तरफ, यहाँ पे जो है वापसी आएंगे एसटीजी। और यहाँ पे अच्छे खासे ड्राफ्ट थोड़े से लग रहे हैं मेरे को, थोड़े यूनिक ड्राफ्ट लग रहे हैं। टिग्रेल काफी समय के बाद हमें मैं कहूंगा एक टीम फाइट पे आता हुआ दिखेगा। और यहाँ पे थोड़ा सा ना मेरे को लग रहा है जो आउटलाव है ना वो थोड़ा सा कंफर्ट पिक की तरफ जाती हुई दिख रही है। उनके पिक्स की बात करें, मियां उन्होंने उठाया है, उसके साथ साथ यहाँ पे लापू लापू का आगमन होगा, वो टैंक यहाँ पे उठाते हुए दिखेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोनों ही टीम की तरफ से वैसे पिक्स आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे ईएक्सपी की बात करें तो यहाँ पे थैमूस आते हुए दिख रहे हैं, शायद जंगल भी जा सकते हैं। अभी थोड़ा सा फ्लेक्स पिक है, देखना पड़ेगा कि क्या रहता है। लेकिन उससे पहले जो बैंस है वो आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे चौथा बैन की बात करें, कडीता बैन हुआ है, और आउटलॉ की तरफ से भी चौथा बैन रहता है। लेट्स सी यहाँ पे क्या रहने वाला है। सुई को बैन किया जाएगा। सुई को बैन यहाँ पर करते हुए साथ ही साथ आप देख सकते हो कि आउटलॉ क्या है, ओलीगार्च, बढ़िया नाम है भाई, ये तो नहीं पा रहा हूँ मैं, आउटलॉ ही बुला देता हूँ। टीम आउटलॉ बनाम टीम आर्लिंग। आर्लिंग की तरफ से आप देख सकते हो किस तरीके के पिक्स आ रहे हैं। अटलास, फमोस, क्लिंट, सामने अभी बैन होने वाला है। सुई के बाद शायद से मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं फेडरन को बैन कर दे। जी नहीं, कोशिश यहाँ पे रहने फेडरन वाली है। आई थिंक थोड़ा सा हम जो है वेट कर रहे हैं टीम के साथ, थोड़ा अब चलते यहाँ पे विचार कर रहे हैं कि क्या हीरोज बैन किया जाए। देखिए एमएम यहाँ पे आ चुका है, थोड़ा जंगले की तरफ जा सकते हैं, मीच के ऊपर बैन कर सकते हैं। गॉड यहाँ पे काफी ज्यादा रहेगा, देख सकते हैं कि गॉड के ऊपर अगर बैन आता है या नहीं। लापू लापू वहां पे मौजूदा रहेंगे अपनी इम्यूनिटी के साथ, तो वहां पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा
और चलिए इसी के साथ यहाँ पे पिक किया जाएगा। वलेर यहाँ पे आते हुए दिखेंगे हमको वो डिसएंगेज के लिए, ताकि अगर चैनक यहाँ पे आती है तो उसको उससे बच के ना उनको सेकंड स्किल मार के थोड़ा डिसएंगेज किया जाए, उनको थोड़ा पीछे धकेला जाए, तो वो अच्छी स्ट्रैटेजी यहाँ पे रहने वाली है। और आर्टलेस के साथ काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे चलते हुए दिखते हैं। पिछले मैच में देखा हमने जिस तरीके से एटलेस का वो अल्टीमेट वहां पे लगा था, एससीजी 4 बंदों को एटलेस ने एक साथ पकड़ा था और लाइक बोल सकते हो एक तरीके से धप्पा किया था वहां पे एटलेस ने, और जिसके कारण वो फाइट वहां पे हुई। फिर उसके बाद ड्रैगन जो थे उनकी तरफ से वो अल्टीमेट वहां पे लगा और वो कॉम्बो बहुत बेहतरीन तरीके से लगा था। और ये देखिए यहाँ पे कुशन का आगमन होगा, उसके साथ मेलिसा यहाँ पे आती हुई दिखेगी। 2 MM यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं। एसटीजी ये थोड़ा सा अलग हो गया मेरे ख्याल से। बढ़िया हो गया भाई, ये मजा आ जाएगा भाई। ऐसे मैचेस मैं देखने के लिए पागल रहता हूँ भाई। ऐसे मैचेस बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो डेफिनेटली ऐसे मैचेस जब होते हैं तो मेरे मजा ही आ जाता है अलग सा। 2-2 MM के साथ, वो भी गुशन भाई। काश यहाँ पर ताना भी सामा होती। नहीं एसटीजी ये आपकी स्माइल के पीछे जो ये अभी आपने जिस तरीके बोला ना, ये स्मर्फ, ये आपकी जो अभी जो स्मर्फ दिख रही है ना, फोटो में भी दिख रही है और वैसे अभी वॉइस पे वो भी दिख रही है, तो वो मैं समझ रहा हूँ जिस तरीके से आ रहा है। और आई मीन भाई 100 में से 1 मैचेस ऐसे जाते हैं। ये और एक्चुअली पता है शिंदा भाई, ये जी जी एक्चुअली मैं प्रिपेयर हो रहा हूँ। ये मुझे गॉड ने प्रिपेयर किया, क्योंकि मैं एक दूसरी जगह जा रहा हूँ ना, आपने बताया है मुझे, तो उसके लिए मैं पहले से प्रिपेयर होके जा रहा हूँ भाई। बिल्कुल बिल्कुल। मार्टिस का आगमन हो चुका है, सारे डिसएंगेज जा रहे, सीसी आपके लिए यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक तरीके से नाकामयाब हो जाएंगे। और इस समय ना टीम आउटलॉ वो बोलना चाहती है कि हम लॉ के अंदर नहीं खेलेंगे, हम जो एक ड्राफ्ट लॉ बना हुआ है ना, हम उसके अंदर नहीं खेलेंगे, हम आउटलॉ है भैया। हम लॉ से जो है बाहर रहते हैं, हम कानून से जो ऊपर रहते हैं, हम अलग यहाँ पे खेलेंगे, अपना मेटा बनाएंगे यहाँ पे 2 MM के साथ। 2 MM के साथ, लेकिन मुझे बस ये जानना है कि यहाँ पर जंगल अगर गुशन कर रहे हैं तो मिड पे कौन खेलने वाला है? लाइक आप मलेसा मिड पे यूज करने वाले हो या फिर मिया को मिड में यूज करने वाले हो? क्योंकि जो भी आप मिड पे यूज करोगे अटलास से आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। क्योंकि मेरे एक दोस्त है, वो अटलास खेलते हैं मेरे साथ रैंक पे, तो वो स्टार्टिंग पे ही भाई MM के पास गैंग करने जाते हैं और उनको फर्स्ट ब्लड पता नहीं कैसे मिल जाता है यार हमेशा। बट ये इसी के साथ लाइन ऑफ जॉन पे स्वागत रहेगा सभी का, आउटलो ओरिगॉच बनाम टीम आर्लिंग ML। और गाइस अगर आप HOK के फैन हो तो जल्दी से जल्दी रजिस्टर कीजिए अपने टीम के साथ अल्गैम्बो स्पोर्ट्स में, क्योंकि ट्यूसडे को होने वाली है HOK स्क्रिम, पहली HOK स्क्रिम, द इनॉग्रल HOK स्क्रिम। होप करते कि आप सब जो है आगे आएंगे अपनी कम्युनिटी के लिए। बट यहाँ पे फिलहाल के लिए तो मोबा चल रही है। और यहाँ पे मैं टीम्स को भी बताना चाहूंगा कि यहाँ पे रीस्टार्ट नहीं मिलता है मेरे दोस्त। आप एक जगह अगर आ रहे हो तो मिस्टेक ऐसी नहीं हो सकती है आपसे, आपको बहुत समझना पड़ेगा इस चीज को। और ये चीजें ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि जब भी आप ऐसे टूर्नामेंट वगैरह पे जाते हो वहाँ पे रूल बुक बाकायदा दी जाती है, और रूल बुक में ये रूल्स होते हैं कि रीड्राफ्ट नहीं किया जाएगा किसी भी कीमत पे, अनलेस की कोई गलती प्रोडक्शन या फिर बोल सकते हैं कि पीछे टेक्निकल इशू ना हो तब तक। वरना उसके अलावा आपके जो है यहाँ पे आप जो है रीड्राफ्ट की अलाउंस नहीं मिलती है। और ये चीजें आप लोगों को सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये चीजें जो है बाकी जगह नहीं बताई जाती है। आपका पहला मैच हो सकता है टूर्नामेंट में, यस वी अंडरस्टैंड इट। और इसलिए हम लोग ना यहाँ पे जो एल्गाम्बो ई स्पोर्ट्स है ये और ऐसी कि आपको मौका दे रही है यहाँ पे ऐसे खेलने के लिए। एससीजी में यहाँ पे एक और चीज बताना चाहता हूँ कि मैं ना रिसेंटली एल्गाम्बो ई स्पोर्ट्स से पहले मैं जब देख रहा था ना, लोग भाई स्क्रीम्स के लिए भी पैसा लेके करवा रहे थे स्क्रीम्स वगैरह, और यहाँ पे फ्री में मिल रहा है आप लोगों को, तो थोड़ा सा आपको भी रिस्पेक्ट रखना पड़ेगा, आपको भी थोड़ी सी जो बाउंड्रीज है ना आपको भी उसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये सब चीजें आपको रहती है मेंटेन, आपको वो मेंटेन करके रखनी है, और इन सब चीजों के थ्रू यहाँ पे खेल देंगे। लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा टेक्निकल पॉज लिया जाएगा, जो लैग है ना वो थोड़ा सा जो है वो फेयर प्ले देने के लिए टीम्स के बीच में उस चीज को इंश्योर किया जाएगा कि सबके नेटवर्क यहाँ पे जो है अच्छी तरीके से रहे, क्योंकि यहाँ पे एक फेयर प्ले जो है वो देने की कोशिश की जा रही है। और इसी के साथ जो टीम्स है वो वापिस आती हुई दिखेगी और ये मैच जो है दोबारा से स्टार्ट होता हुआ जाएगा। फिर से मैं बोलना चाहूंगा कि वेबसाइट पे हमारे लिंक्स छोड़ दिए गए हैं मोबा का मंडे के लिए, चुकी का ट्यूसडे के लिए। गाइज मोबा अगर आप खेलते हो, आपकी टीम खेलती है, अगर आपको स्क्रिम खेलनी है तो मंडे स्क्रिम होने वाला है, उसके लिए रजिस्टर कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन हो चुका है वेबसाइट पे, और अब आपको वेबसाइट की लिंक जो है, रजिस्ट्रेशन की लिंक जो है वो यूट्यूब में मिल जाएगी। अगर आप HOK खेलते हो तो ट्यूसडे होने वाला है HOK का जो आप बोलते हैं स्क्रिम। और इसी के साथ
अंदर चलते हैं यहाँ पर और ये देख सकते हैं कितना ज्यादा यहाँ पर दिक्कत आता हुआ दोनों टीम को, थोड़ा सा वो दिक्कत हुआ था। और आप देख सकते हैं कि इसी के साथ एक स्लेन यहाँ पर आता हुआ क्लिंट की तरफ से 2-0 का ये स्टार्ट। भूषण अंदर जाते हुए यहाँ पर क्या वो किल सिक्योर कर पाएंगे? नहीं, उनके ऊपर यहाँ पर भारी तौर से डैमेज आ रहा है। आप देख सकते हैं बढ़ाने की कोशिश, एजेंट यहाँ पर किल सिक्योर करेंगे। तमूज गोज डाउन, स्लेन हैपन आउट द क्लिंट। बहुत ही बढ़िया स्टार्ट यहाँ पे और डबल किल सिक्योर करेंगे भूषण। 3 for 3 का ये स्कोर, अच्छी स्टार्ट यहाँ पे टीम आउटलॉ ओलिगार्च की तरफ से। अंदर की तरफ जाएंगे गुशन डैमेज देने के लिए, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आई थिंक ये टीम की तरफ से सरेंडर आया है, तो अभी जो है मैनेजमेंट से बातचीत होकर ही हमें पता चलेगी क्या निर्णय लिया जाता है। तो कुछ देर में हम आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी को फिर से अलगैम्बो स्पोर्ट्स के वीकली स्क्रीम क्लैश में। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि दोनों टीमों के बीच में जो है उनके बीच में थोड़ा सा जो है नेटवर्क इशू का प्रॉब्लम हुआ है दोनों टीम का, जिसके कारण अभी हम इस मैच को आगे नहीं बढ़ा सकते। दोनों टीमों ने सरेंडर किया है, तो हम आशा करते हैं कि वो फिर से रजिस्टर करेंगे फॉर द मंडे स्क्रिम्स
क्योंकि मंडे होने वाली है मोबा की स्क्रीम, ट्यूसडे होने वाली है एचओके की स्क्रीम। अगर आप एचओके की टीम बना रहे हो, एचओके में खेलते हो, तो फिर आप ट्यूसडे के लिए रजिस्टर कीजिए। अगर आप मोबा पे खेलते हो, मोबा की टीम आपके पास मौजूद है, तो आप मंडे के लिए रजिस्टर कीजिए। रजिस्ट्रेशन ओपन है हमारे वेबसाइट में, और वेबसाइट का जो लिंक है वो यूट्यूब में दिया गया है, वहां से आप चेकआउट करके जा सकते हो। अगर आप वहां से नहीं चेकआउट कर सकते, तो फिर अलगैम्बो स्पोर्ट्स के डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कीजिए, या फिर इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कीजिए, वहां से भी आपको मालूम चल जाएगा। लाइक कीजिए हमारे स्ट्रीम को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट डाउन कीजिए कि आपको कैसा लगा आज का वीकली स्क्रीम, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं टीजी शिंद्रा लेते हैं विदाई आज इस मोबा वार्म अप क्लास सीरीज से। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीक मंडे फिर इसी टाइम पे। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल एवरीवन, गुड इवनिंग, आई मीन गुड नाइट, सबा खैर, सॉरी।